कि आप बताएं कि आप इंडिया से कहाँ से हैं और आज आपने ये सेमिनार क्यों अरेंज किया है, जिससे लोगों को पता चले कि what you think about Hindu Unity Day and why everybody is here today. मेरा नाम अनिश कुमार साहनी है, इंडिया से मैं इंदौर मध्य प्रदेश में हूँ। आज हिंदू यूनिटी प्रोग्राम की बड़ी जरूरत है, because Hindus are not united. That's why we are doing Hindu Unity program. And I'm here today because Dr. Subramanian Swamy, Mr. DILIP GHOSH, and Mr. Hukam Singh, who have come all the way from India to see them and listen to them. Thank you very much. Thank you, Swami sir. आपका नाम? My name is Shivadas Nair. I am a convener of all the 6 fronts of BJP, New York, and I am very happy to be here, joined with the Hindi Unity Day. And one of the things I want to say that we miss Narayan ji at this moment. He was the enthusiasm to this forum, and I am getting it now. I want to say that again, we all miss him. Thank you. My question is, would you like to give some ideas that why this seminar has been arranged today, Hindu Unity Day? What made you interested to come here? As far as we are all NRIs here, in America we have 3.5 million NRIs. So out of that, I am not sure how many Hindus are here. We need to have a forum to speak our community facing, Indian community basically, Hindu community facing here as well as in India. So that is the best forum to express our ideas through our NRIs. Thank you so much. To see you, VIBHUTI. We like to have some ideas from you, where you belong from India, and what do you think about this seminar and this organization? My name is VIBHUTI. I'm from Bihar. I studied up to 12th grade in Bihar, and then I moved to Pune and studied there my graduation. I'm now in the US ever since 1991. When I came to the American Express Bank, I was from North America at that time. So India's liberalization story is something that people like us carried forward in a big way. About this organization, I had known Harish ji for a very long time, and I had known Mr. Rajya ji very well, including Mr. VIBHUTI. I was very motivated to see that this organization was so well formed, and they were doing some outstanding selfless work. My involvement with this became even more, and my jagruti, if I may say, use the word, about everything Hindu, Indian became very intense when I came here in 91. Because in every forum, you are required to address. So I have done more than 70, 80 corporate presentations asking American companies to invest in India. And as you know, the Americans want to know everything. While we may not value political risk and social risks, but political and social risks are a very high parameter in their study of things. And remember one thing, 1991, we had no story to tell. We were virtually belly up. Politically, we were not aligned with the United States. So even a country like, despicable, I'm very vocal about my choice of words, even a country like Pakistan was so much closer to them that many times many Americans would ask me, are you a Pakistani? I said, no, there's a big country next to Pakistan. That's a country I belong to. You just set the geography right. So I'm very excited. I do a lot of things on my own. When we begin the conversation, I'll share with you some of my thought process. But I would urge everybody to support Hindu unity and this organization as much as you can. Because the time for us to be counted is now. Otherwise, we will lose that. Thank you. VIBHUTI, there is one more question. Do you have any special ideas to give that how we can make this organization much better for future and how people should work in Hindu Unity Day? The one thing which I will always say that we
love to spend our time in खास करके इन विचार विमर्श विश्लेषण विमोचन और विज्ञान गीता का सबसे बड़ा रस जो था कर्म का करना है वो हम भूल गए। तो my suggestion to all of you would be that every one of us have confronted a situation in which either we had the answer or you didn't have the answer. But what my suggestion is that start doing things within your own ambit of connection. Let me give you one example. That is something which I want that each one of us here begins to do that from now onwards, not person. So my suggestion is, let me tell you something. The 3 words that I hear on all television channels is gurus of Wall Street, pundits of politics, and the mantra. Right? According to our Hindu Dharma, these 3 words have बहुत बड़ी महत्ता है इन तीनों शब्दों का। We all know that. Guru, Pandit, Mantra, इसका बहुत बड़ा सम्मान है। But they use it, the Western media uses it in a slightly negative undertone. I questioned one of the people, and I'm going to do that on Tuesday in a media event, is that why do you use the Guru, Pandit and Mantra when you do not know the meaning of these words? Why don't you use the saints of Wall Street? Why don't you use apostles of political wisdom? Why don't you use the gospels instead of mantra? And they all go quiet. I'm saying that it's time to assert yourself as come. Question it, argue, insist, don't give in. Because it's not a question of argument alone, but doing it right. And in the second one, this is very, very important. आपने सुना होगा कि हिंदी शब्दों का बिल्कुल तोड़-मरोड़ हो जाता है the moment you put it in English. Now we know Ram is Ram. He is not Ram. His name was not Ram. Ram का नाम राम ही था. धर्म है, शास्त्र है, संस्कृत है. It's not Sanskrit. It's not Dharma. It's not Shastra. उच्चारण बदले. Thank you very much. Thank you. पूर्णिमा जी, आप अपने विचार प्रकट कीजिए। नमस्कार सबको। हिंदुस्तान से हम अपने हिंद देश से हम हिंदी और हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं। मैं हिंदी में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी ये मातृभाषा है और हम सबको ये भाषा जोड़े हुए है, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो और किसी भी राज्य का हो। हम अपने हिंदी भाषा पर गौरवान्वित हैं और इस दिवस को 21वीं तारीख को हमारा ये 21वां हिंदू यूनिटी डे। यूनिटी का मतलब है एक होकर, एकजुट कर, एकता में रहकर हमें सबको एक साथ मिलकर भारत का बंधन करना है। हम अपने भारतीयत्व जितना भी हमने भारत से जो कुछ भी प्राप्त किया है उसको संजो कर रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इन लोगों को, नारायण कटारिया जी को, राजधानी जी को, सुषमा जी को और सभी को मैं अभिनंदन करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम हर साल इतना बढ़े कि हमें मेडिसिन स्क्वायर गार्डन भी कम पड़े। तो मैं इसी प्रार्थना से अभी यही कहूँगी, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हमें अपने हिंदुत्व को बचाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा। My name is Dr. Pal, Dr. Arjuna Pal. I'm going to be speaking in English because some of the people probably doesn't know Hindi. And because I heard one Bhaisab's talk, I remember many years back I went to the biggest mall in Minnesota and my heart pained at that time. There was a religious site, and I asked them that what is this. They said we are trying to tell what different religions are, and then the person asked me what is your religion. It was about 25 years back. I said my religion is Hindu, and then the lady asked me what is Hindu, where are those people. It pained my heart so badly. Does it mean they did not know who are the Hindus, or they don't want to know the Hindus? I mean, because
want to put our Diwali stamp, and we have to go so far. Still I went to the, even it is approved, I went to post office and I asked, I want to buy Diwali forever stamp. As everybody knows, it is approved in the post office, Diwali stamp. And he said, what? We don't know. These are the only stamps. So then I asked, when it will be approved? Probably sometime middle or early part of the October, it will be approved. So I will wait and I'll ask those things. So the thing what I'm trying to say, the people don't want to know that who the Hindus are, or they just want to tell, they control or dictate that this is the thing only prevails, which is not true. With our own hard work, with our own perseverance, we came long way. Now we have a Diwali stamp. We probably one day have Diwali holiday also. So these are the few things I just wanted to say. Maybe this is the beginning, telling that Hindu Unity Day, and hopefully once we will also start having young people Hindu Unity Day, because that's what we have to do, and we have to continue to fight for that and struggle for that. Because as I said, it paid me, and after 20 years when they start knowing about Hindus, I send them a big check, because I think everything talks with money. And they send me the thank you letter and ask them all those kind of things. So that's the thing, as I said, maybe this is a good start in the Unity Day, and hopefully it will extend quite a bit. Thank you, Arunaji. I would like to say one thing to people over here, that Indians, Hindus in New York City, has been putting a Diwali festival last 35 years at South Street Seaport. They are encouraging their culture and other things from India, and people are participating a lot. At South Street Seaport, more than 50,000 people come there. And everybody must be knowing about the FI also, for 15th August parade also. So quite a lot of people are very much accustomed about Hinduism here in Tri-State area and everywhere. And stamps, of course, the Diwali stamp is already released. And people are also trying, Hindu students from one organization are also trying for Diwali holiday in schools. So which will be a very big thing. Alternate parking has been suspended on Diwali Day. So Hindus have done quite a lot over here last so many years. We are proud of that, and of course Hindu Unity Day is the best one. We can help more Hindus to go ahead and work on their society and culture. Thank you. आज आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, और आपसे बहुत ज़्यादा आग्रह कर रहे हैं कि आप बताइए आज के इस फंक्शन का क्या महत्व है हम सब हिंदुओं के दिन में। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज यहाँ पर हिंदू यूनिटी के नाम पर यहाँ पर हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। आप सभी को मालूम होगा कि हिंदू धर्म ही दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, और जितने भी बहुत सारे लोग हमारे जो वर्तमान में बहुत सारे क्रिश्चियन, मुस्लिम, अलग-अलग जो भी नाम हम जानते हैं, वो सब इसी से निकल करके आया है। इसी से लोग सीखे और लोगों को फिर प्रीच किए। तो हम हिंदू लोगों को यूनाइट होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। हम लोगों में थोड़ा सा क्या है, हम लोग एक दूसरे को बताते नहीं अपनी बात। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों की जो संस्कृति है, जो हम लोगों का जो कल्चर, ये दुनिया में सबसे पुराना अभी भी रिच है। दुनिया के बहुत सारे लोग घूमते फिरते जाते हैं, वहाँ पर बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत शांति महसूस करते हैं। हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हम लोग उस भारत के भूमि पर जन्म लिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में जो हम लोगों के हिंदू धर्म से जो शिक्षा मिली है, ये हम आगे बढ़ाते चलें, लोगों को बताएं कि हिंदू धर्म क्या है। तो हम लोगों को इसमें अपने आप को पहले जानने की जरूरत भी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ
क्वेश्चन है ये हिंदू धर्म में बताया जाता है। और हमारे सहानी जी और हमारे इनके जो और कमेटी के मेंबर हैं फैमिली और इस कमेटी के मेंबर हमेशा ही इस चीज़ को लेकर के बहुत ही चिंतित रहते हैं कि हम लोगों के जो हिंदू धर्म के जितने भी सदस्य हैं एकजुट होकर के हम लोग कोई बड़ा बड़ा कार्यक्रम नहीं लेते। तो हम चाहते हैं कि हम लोग इसको लेकर के और भी बड़ा बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करें। ये जो आज हम लोगों का ये कार्यक्रम है, कल हम लोग इससे डबल ट्रिपल की संख्या में जुड़े और हम लोगों को बताएं। हम जो है पर्सनली हम आनंद मार्ग के सन्यासी हैं। आनंद मार्ग यहाँ पर हमारा न्यूयॉर्क में भी क्वींस कॉलेज के सामने सेंटर है। हम लोग योगा और मेडिटेशन सिखाते हैं। हम लोग भी सन्यासी बने इसीलिए बने कि हम लोग जो ये अच्छा चीज़ें जो भारत की जो धरोहर है वो लोगों तक पहुंचाएं, जो मेनली हिंदुइज्म के थ्रू लोगों को बताया गया। तो ये हम लोगों के पास जो हिंदू धर्म का जो धरोहर है इसको हम लोग लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हम लोग भी आनंद मार्ग के सन्यासी इसी काम में जुड़े हैं, लगे हैं। आप सभी को हमारे आश्रम में भी आने के लिए हम स्वागत करते हैं। जिनके पास समय हो आप हमारे फ्लशिंग में क्वींस कॉलेज के सामने सेंटर है, फिर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ तो समय का अभाव है और हम इसी के साथ में शुभकामना के साथ में हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब निशा राम राजा से आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट हर टू से few words about these things what's happening here today this evening. Hi Sitaram, my name is Nisha Ramacha. I am the president of the Hindu Students Association International. So we focus a lot on providing information about Hinduism, getting Hinduism out there. All the misconceptions are taken away from Hinduism. People can know what we are about. So I think Hindu Unity Day is a brilliant way of bringing together the Hindu community, not just from India, but from all over the world. Because I'm originally, well, my family is originally from India, but we are West Indians. I'm from Trinidad, there's Guyana, there's Suriname, and I think this is a great way for us to get together and celebrate our Dharma. And one thing I'd like to mention, the Hindu Students Association International is working on making Diwali a public holiday here in New York. And I think this is a great way that we can show recognition to the Hindu community and our presence here. By making an official holiday, we bring recognition to ourselves, and the United States, that brings global recognition. It is already a holiday in Trinidad and Tobago and Guyana. Why not the United States? Thank you. Thank you Nisha so much. Mr. Prasad जी, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप बताइए आप आज यहाँ पर कैसे पधारे और आप क्या सोचते हैं हिंदू के बारे में, हिंदू डे के बारे में। हाँ, आप अंग्रेजी में you can speak in English. Then there's a name and where are you? Namaste. I'm Dr. M.P Rajya Sabha, professor in mechanical engineering in Srimanti Institute of Technology. And today is a very special day. The reason why it is a special day is whenever we see the whole, the total, which our Sanatana Dharma, or what is commonly known as Hinduism, says, Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. This Purna means totality. Totality means unity. Unity means that big one. When we say this one, it includes everything. Now, this inclusion of everything is the way the world is created. The world is like that. If you take one person, there are many limbs. If you take one house, there are many rooms. If you take one tree, there are many branches and leaves and things like that. So this is something that unity is
built into the nature because it is the creation or the manifestation of that unitary entity what we call Brahman. The word Brahman itself is not translated as God. It is translated as all-inclusive, ever-expanding, unitary strength. That is called Brahman. So, Hinduism or Sanatana Dharma is the eternal, unitary entity that we can think of, or unitary dharma. So, it's very important that we understand when we say Hindu Unity Day, it is Sanatana Dharma itself. Because any other isms that we take, other than the Sanatana Dharma, is all based on the time, based on the space, based on who created that. Maybe a prophet or maybe somebody. So that means it all started in a time and a space. It means it is all divisive, it is all focused, it is all local. But the global, the cosmic is Sanatana Dharma. So when we say Hindu Unity Day, it basically is Sanatana Dharma. Now the rishis who experienced this unitary vibration called and told us that Ekatva Manupashyata. They kept on telling us Ekatva Manupashyata, Ekatvam Manupashyata. They tell that for every one of us, for every human being, not just Hindu, see that one thing, see that oneness, see that all-inclusive thing. That is the goal of human life. So it is only Sanatana Dharma or Hinduism which declared totally from the experience that Vasudha Iva Kutumbakam, Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one family. Now, where is this concept available other than Hinduism? There is no other place. The reason is, it is not based on some slogan, it is based on the experience. The great Ramanujacharya, who gave us the Shivaishnava philosophy, he says a beautiful thing. This whole universe is like the body of Brahman. The whole universe is like the body of Brahman. So if you want to see the Brahman, it is all here. It's all what we see here. We are all part of that. So this unitary mission, unitary vision that was given is the message of our Rishis. That is why they say, Vasudhaiva Kutumbakam, Ekatva Manupashyata. They also said another important thing that I'm sure we all know, Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kashchit Dukkha Bhave. This is the message of our Rishis, that may everyone see that unitary entity, unitary oneness of Brahman and achieve the happiness in their life. That is the message and that's why I'm here. Thank you so much. You here, and I have some requests to have few of your ideas, what you think about today. Yes, hello, my name is Vincent Bruno, and I am President of Justice for Hindus. First, I would like to say that I came into Hinduism through the Hindu Student Association. You saw Nisha speaking before. So it is very important for us to get onto the college campuses. It is very important for us to mimic what the Muslims and the Christians and the Jews are doing on the college campuses, going there, setting up student associations, putting out literature, making Hinduism enticing, making it something that people want to get involved in. And not only will that electrify and bring in the Hindu youth who are already on the college campus, it will bring in fresh blood. It will bring in new people into the fold who can come in with new ideas and help us move along. So today is called Hindu Unity Day. So I guess they are asking for us to give suggestions what will help unite us. That is the one thing. There needs to be a think tank. There needs to be a centralized organization that comes together and thinks about ways to give Hinduism public relations. It needs public relations on the college campuses. It needs public relations in politics.
Hinduism is becoming a voting bloc here in America. This electoral cycle is showing politicians that Hindus have money to donate and they are votes. There are 2.5 million Hindus in America today. Politicians want your votes, but they need to know that you exist, they need to know that you are a voting bloc, and they need to be forced to recognize you. So, all of this, it really needs a think tank. There's a lot of money and there's a lot of will out there, but what needs to happen is you need to come together and you need to hire a group of young people. I stress that you need to hire young people that can come together and can come up with very good ideas. Particularly, I would say, young people who were born in America or have lived in America for a long period of time, and that can come together and pay these people, even if it is minimum wage. Muslims, Jews, and Christians, they get young people together and they give them paid positions. They give them an office where they have computers and they have access to phones, they have access, and they don't do anything else except for their career job is to sit and think about ways to propagate and strengthen Islam, Christianity, or Judaism. This is what you need to do. It doesn't need to be big at first, even if it's just 2, 3, 4, 5 young people that you can select yourself. Someone needs to come together. It doesn't need to be a lot of money. You just need an office and you need some wages for these people. And their job needs to be to think about what it is that needs to be done to get Hinduism PR. How do you get Hinduism out into the public? How do you get Hinduism into the schools? How do you get Hindu holidays in the schools? How do you get politicians to recognize the Hindu vote? How do you create a Hindu vote bank? How do you get rid of misconceptions about Hinduism? How do you propagate the religion? How do you get the scriptures out there? How do you present Hinduism to a Western audience? You know, what works in India is not going to work here. There needs to be new ideas. So that is, I really stress that there needs to be a Hindu think tank, and it needs to be full-time, and that's what you need to do. If you really want Hindu Unity Day, you need to imitate what the other groups are doing who have success. And that's what I'd like to say. Thank you so much. We are really grateful for your wonderful ideas, and I hope we follow on those footsteps. Thanks, Mom. Again. People here who have feelings about Hindus and they will love to express their feelings. So please listen. Now, someone special has been giving you some thoughts. What he thinks about it. Namaskar, brothers and sisters. I am Ramesh from Exonite, New York. You see, I am very proud of being Hindu, and recently I became very proud that in the Olympics, a Hindu in tennis, along with Serena Williams, his name Rama, his parents were also Hindu. He said that he got a gold medal by the control of the mind. By being a Hindu, he knows how to control the mind on the court. So I was very inspired that all youngsters or old people must draw a lesson that upbringing is very important. Upbringing. We children play so many games and parents take them, but see how by right upbringing he could reach silver medal, and that too in Olympics. I am very proud of being Hindu. Thank you. Thank you so much. And we are also proud to know that Hindus all over the world are making the name of Hindustan and their own culture everywhere in the world, and women too. They are also in front. Thank you. Dr. Anurita Kapoor to give her ideas. Thank you so much, firstly, to have me here. I really appreciate this Hindu Unity Day, which has been going on for so many years. I have been a participant here, and again, I'm here this year to celebrate the Hindu Unity Day with all our overseas Indians and Hindus all around the world. I am from New Delhi, India. I grew up in this country, but India is very close to my heart, being an Indian by birth. So we're here again
to celebrate and wish you all the best. And I'm so thankful and happy to see everybody here, and we encourage lots and lots of more people to come and join here and be a part of this. Thank you so much. Thank you. We are so happy to have you here, and please contribute your ideas about this occasion today. Okay, my name is M.P Rajya. I'm a law student at BENGAL University, and I was invited here from by the president of the board. Now, he realized that what is very important, I think that many young people need to involve. When I was a student in undergrad, so many people from the Christian group tried to convert, and they, this girl went as far as to say, well, actually a lot of the kids are doing, a lot of people are Christians, and I felt they're kind of actually very disappointed. So from the we realized that nobody, or how about no one found out this problem, and I was really surprised and pleasant, right? And I got what he was doing today, like 2-3 years ago. Thank you, Aditi. Thank you so much. Namaskar. Right now here you saw, you heard Aditi speak, Aditi Sharma. I have to talk about that. Aditi Sharma, I first saw her in front of the United Nations. Going to United Nations, she has got a problem, vision problem. She is standing in line to receive and welcome Narendra Modi. That is a big flag for her to be needed. She is the one that went there to receive and welcome Narendra Modi. She cannot see herself. She is actually legally impaired in vision, but she is the one who was there and taking all the hardships to go there. And she is a student of law, working for the Hindu causes, making resolutions and passing the thing on. This is one thing inspires everyone, that one, a student with a lot of duties and impairments, still can proceed and do something for the community, for the people, for the general people of the world. Thank you, Aditi. Thank you very much all for coming here. Thank you. Thanks, Aditi. This is the biggest inspiration for all of us. My name is Ashok Basu. I've been living here since 1980. And we have a club in Brooklyn, mostly 90% Bengali there. And we make, and Kavita Chaudhary is our president. And because of his request he came, and he is a very nice man. And one thing, when somebody when my previous speaker said about the alternative party, and when I see the first time that our Diwali is open, I was very, very happy, and that happiness comes from the heart. There is a saying that the heart has its own reason, of its reason doesn't know. So really, I was very happy. Before that, I keep calling to my friend that I see about 17, 18 holidays, alternate party, Jewish holiday, Jewish holiday, Jewish holiday. I was very, I'm not upset, but I'm upset with why you don't think Indian holiday comes from that. And also one of my Muslim friends said, in Hinduism, suppose in Muslim religion there is one day all over the world saying, but your religion, it doesn't have that. On that time I recall the only Kumbh Mela. But that is all, we have to believe, we are taking, that is our, I should say difficulty, that is that side, that suppose in Bombay, the way the Ganesh Puja is celebrating is not celebrating all over the world. I'm from Calcutta, the way the Durga Puja was celebrating in Calcutta, Western world is not celebrating all over. That is our, I should say, but I'm just repeating it. When I see, first I always look into organized party. So when I see Diwali, really whose effort is come to the picture, I don't know who, but I sincerely I will congratulate them. Thank you. Thank you so much.
मेरा नाम कृष्णा दारुका है। मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अभी PhD कर रहा हूँ मैनेजमेंट में और एक्टिव पॉलिटिशियन हूँ और नरेंद्र मोदी और ओबामा दोनों के टच में हूँ। वैसे मैं कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, फिर भी मैं ट्रम्प के कंपेनर हूँ और ट्रम्प की तरफ से कंपेन करता हूँ। यहाँ मैं हिंदुस्तान और अपने विचार आपके सामने रखता हूँ। मेरे विचार बहुत कटु सत्य हैं और दुविधाजनक हैं। So that we can hear. मैं आशा है मेरी आवाज़ सब तक जाती होगी। मैं कुछ बहुत कटु सत्य बोलने वाला हूँ, लोगों के नाम लेने वाला हूँ और ये मैं वादा करता हूँ मैं सत्य बोलूँगा और मैं बीजेपी का हूँ और हिंदू हूँ तो कोई अलग अर्थ न लगाना। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क में 45 न्यूज़पेपर छपते हैं इंडिया ओरिजिन के। 45 पेपर्स में एक भी हिंदी का पेपर नहीं है। शर्म की बात है। हिंदी यूनिटी बकते रहते हैं, कुछ नहीं होने वाला। सुधीर पारिक है, वो 2-3 गुजराती के पेपर छापता है, डॉक्टर था, पेपर छापता है। ये हिंदू का हाल है। हम लोग खाली बात करते हैं। मैं हिंदी सम्मेलन में गया था 2 महीने पहले, अपने इंडियन कमिश्नर ने ऑर्गेनाइज किया था। मुझे एडमिशन नहीं मिला, मुझे पुलिस बुलानी पड़ी टू गेट इनटू दैट हिंदी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर सब कुछ लोग विटनेस है, पूर्णिमा जी हैं और भी लोग हैं जिन्होंने देखा। पुलिस की मदद से मुझे हिंदी सम्मेलन में दाखिल किया गया। क्यों? बिकॉज मैंने $50 फीस नहीं दी जो कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया। और आगे चलते हैं, हम लोग संविधान बनाते हैं और फिर संविधान को लेकर रोते रहते हैं। हाँ, मुझे मालूम है तो कृपया क्षमा करें, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ लेकिन एकदम सत्य बोलूँगा। हमारे सबसे खराब मुसलमान जो हिंदुओं के अगेंस्ट में था वो औरंगजेब था, जिन्होंने हिंदुओं का कत्ल किया। उसके रोड के नाम का चेंज करने के लिए दिल्ली में 70 साल लगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने उसको अलाउ नहीं किया। पाकिस्तान के लिए हम 70 साल वेट करते रहे कि औरंगजेब रोड चेंज हो जाए। ये तो हिंदुस्तान की हालत है। हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, कुछ कारण नहीं जानते। अगर शरीफ को और नरेंद्र मोदी को पास में खड़ा कर दें तो एक रेपिस्ट लगता है, एक हिंदू लगता है। नमस्कार स्वामी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए। आज के हिंदू डे के इसमें 4 चांद लग गए। स्वामी जी के पधारने से आज की शाम का महत्व ही कुछ और हो गया।
सुषमा जी Everybody move. We are going to Good evening, ladies and gentlemen. Kindly take your seats now. सोनी साहब बैठ जाए और बैठा दे। Ladies and gentlemen, it's a great privilege to welcome all of you today and welcome the presence of Dr. Swamy and an honorable MLA from Mr. GHOSH from Calcutta. It is a wonderful occasion that last year we met at the Hindu temple. Today we are meeting here. The continuity of the event must carry on. Excuse me, can you hear me? Can we have some silence and respect to all those who are present here? Registration counter, please be silent. Operate quietly, please. Otherwise we can't hear ourselves think. So we begin the program today. We know it is a Hindu Unity Day. And we have assembled here for a very definite purpose. This is the 21st such event. And we have to also recognize that what must happen when the next 22nd time we meet, what must change? Now with some thought processes on that as we go along, I want to invite and begin the program with Mr. Sanjay Athada and Dr. Prasad, who want to do the Shankanad and some mantras. With that avahan, we will begin our program. Mr. Sanjay Athada, where are you, sir? Come. And Mr. Prasad requested that he wanted to join in, and so it is wonderful to have more than one.
3 times, because that is the universal sound which includes all other sounds. We will recite 3 times, slowly and as long as we are able to. So let us begin together. Yeah, hello. I welcome all of you. Welcome to this Hindu Unity Day. This program has been arranged by Indian Intellectual Forum. This program has been arranged by Indian Intellectual Forum. It started in 1999. But this Hindu Unity Day was even celebrated before that, and it was the idea of Narayan Kataria. Each year we take some timely political as well as cultural issues, and you are welcome to raise the issues in this discussion meeting. So for today's meeting, I wish to start this discussion by raising 2 political issues and 1 cultural issue. The first political issue is about the Article 370 of the Indian Constitution, which denies Indian citizens to buy land in Kashmir. This was brought home to the academic community in India in the following way. Some of our colleagues were hired at the universities of Jammu and Kashmir, and they taught for 20-30 years. But after they retired, they were denied to buy a home there and had to come back to India. Just from human perspective, this is grossly unfair. The culprit is, of course, the Article 370. Now, whatever the legal implications of these are, after 70 years, we all feel, and not only before this event, but there were some 10 events I know in New York where this issue was raised, and all time the suggestion was that this Article 370 should be abrogated. Second thing is about the thing that we all feel so much about the destruction of Hindu temples, and in particular the issue of the Ram Janmabhoomi. Few people know the actual legal issue is the property issue of the Wakaf Board. Yeah, probably Dr. Swamy will tell us more about this. So considering just the emotional attachment of the Hindus, the Muslim intellectuals and the rest of the Muslims should just agree to build a masjid somewhere else and settle this issue. I think the lawyers have made this issue complicated than what it is. Now thirdly, the local issue for people, for Hindus in the United States, and it is the promotion of yoga and Ayurveda. And I'm talking about promotion and not about understanding. We all know yoga is good, Ayurveda is good, etc., etc. We all know that yoga and Ayurveda are helpful, but it was our Prime Minister Modi's genius
to raise the consciousness of yoga in saying about it and starting the Yoga Day all over the world. The community here should take the next steps. Bring authentic yogis here, like the Anand Marg is here or the Gayatri Parivar here, and tell them the mechanism how to get its accreditation, certification in American universities or elsewhere. They publish many journals. So in those journals, our yogis should write and make themselves individually known as well as for the cause of the yoga. And yoga is the supreme contribution of the Hindu culture. Now in comparison, I wish to tell you about the Chinese acupuncture. It is now recognized. These issues come under alternative medicine. The Chinese acupuncture is now recognized and it has accreditation, and if you get this acupuncture, the Medicare will pay for it, at least for some part. But correspondingly, if you talk about Ayurvedic Panchakarma, it's not even very much known in the US. So I think for truly celebrating the Hindu unity, the community here should make conscious effort and bring it into vogue in the society here. So with these words, I invite Mr. Vibhuti Jha to take over, and he will direct the rest of the function. Thank you, Ravi. It is great to have that introduction and invitation. This is a very historic day. 21st Hindu Unity Day, and next will happen 1 year later. Key question arises is, why are we here today? Why have so many people come from all over the country or from the town, taking time on Saturday to be here? Dr. Swamy is here. So why are we here today? What is this reason that prompts us to be here today? One of the reasons which I would say is what Ravi said. Despite my request not to use the word dharma, call it dharma, it becomes so ingrained in us that we forget that the actual word is dharma, not dharma, which got anglicized because of English spelling. So what we will do is that as we go forward, we have a very outstanding group of people to speak with you and share with your thought process. But what I want to also say is that we have spent fortunes of time in trying to just discuss, and I call it the 5 V's, which are Vichar, Vimarsh, Vishleshan, Vimochan and Vikyar. We forgot action. We have to now emerge on the role of action with the key principle of Bhagavad Gita. With that in mind, I also wanted to say that just 2 weeks ago, I had the privilege of being invited to speak at the World Brahman Samaj in San Diego. And I said we have to redefine ourselves by being, instead of being defined by others. We have to redefine, we have to reclaim, and we have to reposition as to who we are. And to that end, the role of the young people is very key, very important. The young organizations, Hindu young people must join hands and take the lead. So the first generation Indians now are what I call in the sunset zone. May God give us longer life. But here we are with a finger on your back. And to that end, I want to invite this young man here, Mr. Ravi Jaishankar. He is the National President of Hindu Students' Council. And I would very much want to hear from you and share your thoughts, what is happening, what you are doing, and what is the next stage of action plan. Thank you, Ravi. And one of the things which I learned is that if you cannot convey an idea in 2.5 minutes, it's an idea not worth conveying. So, you have an enormous challenge to do that. No pressure at all.
Namaste everyone. My name is Ravi J. Shankar. I'm the National President of Hindu Students Council. We're the largest national organization of young Hindus in America, and we have a presence at about 50 campuses in America. Our goal is to do basic dharma education and to empower young Hindus with a foundational sense of identity, a basic kind of knowledge of their heritage, so that the stigma of identifying as a Hindu is removed. Unfortunately, there is a lot of stigma and there is a lot of shame around the word Hindu, especially in my generation, and that's purely because people don't know what it really means to be Hindu. People are not educated. Our mandirs don't teach these basic things on how you answer questions or tough questions about Hinduism. Do you guys worship monkeys, cows? What's up with the polytheism? What's up with the caste system? So the kind of environment that a young Hindu is raised in really does not support a deeper sense of connectedness to their heritage and to their culture and of course their spirituality. So that's a brief kind of introduction to what HSC does. But what I want to talk about today is obviously Hindu unity. We're all here for a reason. And I think that if you really look at Hindu unity from kind of a younger generation's perspective, there is a kind of like a facade of unity on the outside, and there's just a complete disarray on the inside. It's really contradictory and hypocritical, at least the way that I see it, how our community is unified. If you actually look at the Western spiritual, New Agey, yoga, vegan community, they're actually much more unified amongst the principles at a deeper spiritual level than we are. And if you go to them, they have this fierce sense of individualism, but it's really about this non-judgmental acceptance of a spiritual way of life that I don't think that we really have. So first, what I think we have to do is we have to find meaning. Why has the yoga industry become this billion-dollar industry? And why are all these kind of ideas such as karma and reincarnation and other buzzwords in the Western population, the non-Desi, non-Hindu population, why are they taking off? Because they actually engage with these concepts at a much deeper level in their daily lives than we do. So they have found meaning in whatever practice, in whatever thought process and philosophy they've engaged in. Have we found meaning? When we go to Bhagavan at the mandir, is it a mere transactional exchange? Or is there a sense of Atma? Is there a deeper sense of Vedanta and Yoga in that process? I am not sure. If there was, I think our community as a whole would be very, very different. Because what is internal manifests externally. Our external situation right now is a great reflection of where we are internally, especially spiritually. So we need to find meaning. We need to change our lifestyles after finding meaning. A lot of these Western yogis are vegan. They don't take cow's milk. They don't take any cheese or dahi because they know how the cows are treated here. They're basic aspects of life that we take for granted and we don't apply any kind of deeper outlook or Hindu perspective to. Western yogis and Western spiritualists do a wonderful job at that, and they're beating us. So if we don't change our lifestyle to be more conscious, to be more environmentally friendly, to bring this kind of consciousness and awareness to our mandirs, to our infrastructure, I think that we're going to continue in kind of this downward spiral that I see. And just a note on that downward spiral, if you look at Hindu mandirs today, and there are of course exceptions, but I would say that the young population, the younger generation, is not attending Hindu mandirs at the same rate that we would like them to.
Now, our Hindu mandirs are picking up a ton of debt by taking out loans to create giant infrastructures and golden this and silver that. Are we really going to be able to pay that off at the rate that we need to in order to stay afloat if our next generation is not donating money in a consistent way? So after we kind of address these issues of meaning and lifestyle, we need to redefine what it means to be Hindu. We've heard talk of reclaiming and using the correct terminologies, but what does dharma really mean? Is dharma religion? Can we call Hinduism religion? Are we pigeonholing our vast tradition using Western definitions and Western paradigms to define us? Because no, we're not polytheists. We're not even monotheists. Monotheism talks specifically about God judging and sin and this very particular process of heaven and hell with just one God. Whereas we are so far beyond that. If you look at our deepest philosophies, our deepest philosophy of non-dualism, Advaita Vedanta, this is so far beyond monotheism. We can try to call it monism, where everything is absolutely one. But even that doesn't encompass the beauty of Advaita. So we need to not only redefine, but we need to empower ourselves to be able to speak assertively, to be able to represent ourselves assertively, to be able to advocate for the needs of Hindus, not just politically, but in the cultural sphere, in different areas of life. And we as a whole community have really not been doing much of that. So I apologize that I've run over. This is a really vast topic, and I wanted to give a lot of attention to these very important things that will deeply impact our kind of transition, this transition of the torch to the next generation, which is one of my most important concerns, but also the health of our community and how actually Western yogis seem to be taking our identity and taking it forward in a more authentic way than we are. And this is kind of worrisome, but I do see a lot of promise. There are a lot of mandirs, especially in the Guyanese community, especially in the Swaminarayan community, where this youth empowerment and this issue of redefinition of identity and carrying forward that identity is a crucial aspect of their function. So I hope that we as a community can actually do more, raise awareness on these issues that are literally right in front of us, and change ourselves internally as well as address the external circumstances that we're facing that are very kind of against us. So I want to thank the organizers. I want to thank Dr. Swamy, Arishji, who has been very gracious in letting me speak and bring up these difficult but extremely important issues that I hope that you as Hindu leaders, you as torchbearers of our community, will be able to take up and address in a real way. Thank you. Namaskar. Thank you, Ravi, for your very thoughtful address and issues that you raised today evening. I just wanted to make an announcement that you see that the entire program is being recorded here, and it will be on YouTube or under the chapter 21st Hindu Unity Day 2016 New York. So this will be available to you after it is edited, brushed, and cleaned. As those are the three words used by the cameraman here, so I wanted to convey that to you. Thank you. At this point in time, I also want to request and invite Mr. DILIP GHOSH. Mr. DILIP GHOSH is a pracharak ever since 1984. And ever since he joined BJP, he has been in a leadership role. He has been the president of West Bengal, a unit of BJP
MP and he's now an MLA. He's traveled a lot, being a pracharak, and that was, I suppose, his job as a pracharak, to be around and convey the message. And including, he has traveled also including Andaman Nicobar. So he's a very traveled man. I just told him that your speech will not give you a single vote, so let your speech be counted. So this will not be a political speech. He is in a very critical state of West Bengal, which is going through tremendous amount of upheaval, in my opinion, as I read it and as I know. So with these few words, I will welcome Dada DILIP GHOSH. I told him, "Awa ke Bangla jani na," but that's all I know about Bangla. नमस्कार। दूर देश में बैठे हुए अपने देश के लोगों को मेरी आंतरिक अभिनंदन। डॉक्टर स्वामी आए हैं मेरे आगे, अभिभावक हैं, और यहाँ के जो पुराने लोग हैं, माता भगिनी, केवल आप लोगों से मिलने के लिए इतने दूर से आना होगा। स्वामी जी तो आते रहते, एक पैर उनका अमेरिका में रहता है, दूसरा हिंदुस्तान में है, लेकिन मेरे लिए 16,000 किलोमीटर प्रवास करके आना बहुत कष्टदायक था। लेकिन 3 दिन से लगातार कार्यक्रम चल रहा है लोगों से मिलने जुलने का। पिछले 2 दिन केवल बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं से मिलने का कार्यक्रम था, और आज बाकी देश का और विदेश के लोग भी यहाँ मिले हैं। बड़ी खुशी की बात है जब इतने दूर आकर के लोगों को मिलते हैं, अपने घर के लोगों को, देश के लोगों को, तो सारी थकावट ऐसे ही दूर हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार 21 साल से आप लोग हिंदू संगठन दिवस मना रहे हैं, और अमेरिका जैसा देश में अलग अलग कारणों से आए हुए लोग हैं, लेकिन अपने संस्कृति और परंपरा को न भूलते हुए केवल धर्म के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए मिलते हैं, यहाँ बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और इससे उम्मीद जगता है कि अपना समाज कहीं भी जाए अपना परंपरा को नहीं छोड़ेगी और नहीं भी छोड़ना चाहिए। और इसके फलस्वरूप आज देश के लगभग 80 देशों में हिंदू संगठन का कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम चलता रहता है, और अपने संतों का, नेताओं का प्रवास चलता रहता है। देश में गतिविधि बढ़ रही है। आप यहाँ बैठ के जो चीज चाहते हैं कि हिंदुत्व का प्रचार हो, देश का सम्मान बढ़े, हिंदू समाज संगठित हो, शक्तिशाली हो, हम देश में रह करके वही काम करते हैं। स्वाभाविक रूप है कि हम वहाँ सफल होंगे तो आपका मन में खुशी होगी, आपको उत्साह मिलेगा, और ज्यादा उत्साह के साथ आप लोग काम कर पाएंगे। देश में राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिवर्तन भी हो रही है, आर्थिक परिवर्तन भी हो रही है, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। और जो हमारी विदेश नीति, उसमें भी काफी परिवर्तन हो रही है। जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे दुश्मन बन चुके थे पहले की सरकार के व्यवहार के कारण, उनकी गलत विदेश नीति के कारण। जो नेपाल है, युगों से जो हिंदू राष्ट्र है, वो अपना परिचय को खो बैठा है, और साथ साथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। उसमें भी परिवर्तन आया है। माननीय प्रधानमंत्री वहां जाने के बाद जो वहां की वातावरण बना है, वो आप लोग देखे भी होंगे। हिंदुस्तान से भी ज्यादा उत्साह के साथ उनका स्वागत किया गया है। एक रिपोर्टर वहां का बोलते हैं कि अगर मोदी जी नेपाल में चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ऐसा लोगों के मन में भावना है। बाकी श्रीलंका है, थाईलैंड, मलेशिया, ये जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आगे संजो करके आगे बढ़ रहे हैं, आज भी गर्व के साथ वो मानते हैं कि हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। वो उनको भी हम खो बैठे थे लगभग। वो देश का खिलाफ काम करते थे, हिंदुस्तान के खिलाफ काम करते थे, लेकिन 2 साल के अंदर सांस्कृतिक जो संबंध वो भी काफी दृढ़ हुआ है, और साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध भी बढ़ा है। और उसके कारण जो हमारे पड़ोसी में रह करके हमेशा हमारे साथ दुश्मनी की है, चीन और पाकिस्तान, वो अपने को अलग कर पा रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट बदल रही है, चिढ़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है। तो राजनीतिक रंग भी बदल रहा है, उसका परिणाम आ रहा है। हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा हर जगह बढ़ रही है। आप जिस देश में रह रहे हैं, इस देश के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे
शक्तिशाली व्यक्ति जिसको माना जाता है, वो भी गर्व के साथ बोलते हैं कि हिंदुस्तान के साथ मैंने अपना दोस्ती बढ़ाई है। ये बोलने का लायक बात बन गया है। और उससे बड़ी बात है, सिक्योरिटी काउंसिल में हमने देखा इस बार सारे देश हिंदुस्तान को समर्थन किया है। एक दिन ऐसा था, लोग पूछते थे कि भारत के साथ कौन है, लेकिन आज उल्टा हो गया है। आज ऐसा पूछा जाता है भारत के साथ कौन नहीं। ये हमारी अचीवमेंट्स है और हर दृष्टि से हिंदुस्तान में सब था, केवल नेता नहीं था। पिछले 10 साल से हम उसी का तलाश कर रहे थे कि कौन आएगा हमको उद्धार करेगा। हम अवतारवादी हैं, हम जानते हैं भगवान 10 बार आए हैं, 11वें बार आ जाएंगे, हमको उद्धार करते हैं, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और कब आएंगे उसका इंतजार करते हैं, हम कुछ नहीं करते। तो उसी का परंपरा में ही हम सोच रहे कोई ऐसा नेता आ जाए, कोई ऐसा नेता आ जाए जो हमको उद्धार कर दे। चलो हमारा प्रार्थना पूरा हुआ, ऐसा नेता हमको मिला है जो हिंदू नेतृत्व के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं पहले मंदिर में जाते हैं, पहले अपने भारतीय वंशज को मिलते हैं, अपने संस्कृति की बात करते हैं, अपनी परंपरा की बात करते हैं। और इसी का उम्मीद बहुत दिन से लगा के बैठे थे हिंदुस्तान के लोग कि हमारे नेता में हमारी परंपरा का झलक आ जाए। हमारे नेता की बात से लोगों को लगता है कि जो हम सोचते थे हमारे नेता वही बात कर रहे हैं, जो हम सुनना चाहते थे वही बात हमारे नेता के मुंह से आ रहा है। और इसलिए पूरा हिंदुस्तान में, चाहे राजनीतिक दृष्टि से जो हमारे साथ में नहीं है, ऐसे लोग भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हाँ अच्छा दिन आ रहा है। खाली स्लोगन में नहीं है, व्यवहार में भी आ रहा है। अभी 2 साल पूरा होने के बाद अपने सरकार ने विकास पर्व मनाया है, उसमें नारा लगा है देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये खाली स्लोगन से नहीं है, ये अनुभव में आ रहा है, महसूस हो रहा है लोगों का, हाँ देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हर बात में, हर क्षेत्र में, एकदम गांव से लेकर शहर तक हर जगह में लोगों की बात महसूस हो रही है। और इसके लिए जो कार्यकर्ता सालों से काम करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी खप गए काम करते करते, वो नए उमंग के साथ, उत्साह के साथ अपना काम कर रहे हैं। हम जहाँ से आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल, बंगाल, जहाँ कभी वंदे मातरम का नारा गूंजा था, जहाँ के क्रांतिकारी वंदे मातरम बोलते हुए फांसी के फंदे में लटक गए थे, गोली के सामने खड़े हो गए थे, दुर्भाग्य से वहाँ अभी भी पाकिस्तान का जिंदाबाद नारा आता है। ये बड़े दुख की बात है। जो यूनिवर्सिटी से हमारे देश के आगे पीढ़ी और अगले हमारे देश को नेतृत्व करने वाले हैं, ऐसे युवा पीढ़ी निकल के आते हैं, ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसे जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता का, वहाँ से स्लोगन आता है पाकिस्तान जिंदाबाद। अब की और हिंदुस्तान की बर्बादी तक जंग रहेगा, जंग रहेगा, या तो फिर वो जो टेररिस्ट के नाम पर स्लोगन आता है हमसे मिलता है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। तो देश में रह करके देश का खिलाफ बोलना, देश की संस्कृति को अपमान करना, और युवा पीढ़ी के द्वारा अभी भी ये बंद नहीं हुआ है, हो रहा है, लेकिन उसका विरोध नहीं होता था, प्रतिवाद नहीं होता था। आज प्रतिवाद होता है, विरोध होता है, पुलिस जाकर उसका कॉलर पकड़ कर लाकर उसको जेल में डालता है। कितना हो गया? देश इसका समर्थन नहीं करता है, लेकिन विरोध भी नहीं करता था। आज इसका विरोध जब होता है तब समाज उसके पीछे खड़ा होता है, मदद करता है, उसको समर्थन करता है, और लोगों को लग रहा है कि ऐसा ये होना बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के टेररिस्ट हिंदुस्तान में घुस करके हमारे फौजियों को मारते थे, सर काट के ले आते थे। 2 साल पहले भी ऐसा घटना होता था। आज इस प्रकार घटना देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई टेररिस्ट हो, देशद्रोही, समाजद्रोही हो, और भारत माता की पवित्र भूमि पर कदम रखने का प्रयास करता है, तो हमारे फौजी का गोली उसका सीना को छिल्ला कर देता है और वही उसको गिरना पड़ता है। हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने का हिम्मत नहीं होता है। अभी ये सिचुएशन है, और उनको मदद करने वाले जो लोग हमारे देश में रह करके पत्रिकाओं में प्रबंध लिखते थे, चर्चाओं में जाके बात करते थे, इसको सेक्युलरिज्म माना जाता था, इसको डेमोक्रेसी माना जाता था, वो लोग धीरे धीरे अपने को अलग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि समाज उनके साथ नहीं है। इस प्रकार वातावरण हिंदुस्तान में बन रहा है, और राष्ट्रवादी शक्ति जो सालों से काम कर रहे हैं हिंदुस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होकर करके दुनिया के सामने सर ऊंचा करके अपना परिचय देने के लिए, उनमें नया उत्साह भर रहा है। इस परिस्थिति में राजनीतिक परिवर्तन जरूरी हो गया है, क्योंकि समाज
हिंदू भावना को लेकर जी रहा था, लेकिन राजनीति दूसरा चल रहा था और उसी राजनीतिक सत्ता के माध्यम से हिंदुत्व को कुचला जा रहा था, हिंदू संगठन को बदनाम किया जाता था। आज कम से कम उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया। दुर्भाग्य से मैं जहाँ से आया हूँ पश्चिम बंगाल से, जहाँ बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम का रचना किया, जो बाद में मंत्र बन गया क्रांतिकारियों के लिए, जिसके आधार पर देश आजाद हुआ। आज भी वहाँ कम्युनिज्म तो नहीं है, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुत्व को गाली दिया जाता है। सबसे ज्यादा टेररिज्म वहाँ है क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर है। बाकी देश में टेररिज्म ठंडा हो गया है, लेकिन बांग्ला और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो अभी भी उनके लिए जमात का, IS का और सिमी का लोग बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं। हर जिला में बम विस्फोट हो रहा है, बम बनाया जा रहा है और यहाँ से फिर जाकर के वहाँ बम तोड़ा जा रहा है। हम राजनीतिक वहाँ कमजोर है। इस बार चुनाव में नया सा एक बार एक नई हुकूमत बनी है, हम 3 विधायक चुन कर आए हैं। राष्ट्रवादी स्वाद अभी विधानसभा में गुजरने लगा है। लोगों में थोड़ा सा उत्साह बढ़ा है कि हाँ, जहाँ राष्ट्रवाद का नारा चला था वहाँ अराष्ट्रीय लोग राज करते थे। ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन राष्ट्रवादी शक्ति वहाँ भी जड़ जमा रहा है, शक्ति संचय करके, और फिर एक बार भारत माता की जय का स्लोगन वहाँ जोरदार हो रहा है। ये बड़ी आनंद की खुशी की बात है। और वहाँ के युवा जो कभी खुद को कम्युनिस्ट बोलने में गौरव महसूस करते थे, सेकुलर बोलने में गौरव महसूस करते थे, आज वो अपने को भारतीय, हिंदू और राष्ट्रवादी मानते हैं। इस प्रकार से एक ट्रेंड नया बना है। तो परिवर्तन का जो प्रभाव है सब जगह दिख रहा है। आज सबसे कठिन जगह जिसको मानते थे जम्मू कश्मीर, कभी वहाँ भाजपा सत्ता में आएगा हम लोग ही नहीं सोचते थे, आज वहाँ हमारे उप मुख्यमंत्री है। असम जैसा कठिन से कठिन प्रदेश है, वहाँ भी भाजपा सत्ता में आया। वहाँ की हिंदू समाज राजनीतिक दृष्टि से सचेतन हुआ है और जो हिंदू कोलैबोरेशन हुआ है उसका परिणाम है आज वहाँ बीजेपी के चीफ मिनिस्टर है। और स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव बंगाल में भी आ रहा है। अब लोग महसूस करने लगे हैं कि हम क्यों एक बार बेघर हो गए। यहाँ बहुत लोग आए हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, एक बीज बन करके सीधा यहाँ आए तो भाया बंगाल भारत में आए हैं। आज वो भी दोबारा सोचने लगे क्यों हमको बार बार निर्दोष होना पड़ता है, क्यों हमको घर बार छोड़ना पड़ता है। आप कल्पना कर सकते हैं एक परिवार का सिटीजनशिप का तो कितना बार परिवर्तन होना चाहिए। मान लीजिए मेरे दादाजी अखंड हिंदुस्तान का आजादी की लड़ाई किया, वंदे मातरम बोल करके फांसी में गए, गोली खाए, जिंदा रहे, लेकिन देश स्वतंत्र हो गया तो देखा कि आज वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, वो पाकिस्तान का नागरिक बन गए। फिर 10-20 साल गया, फिर स्वतंत्र आंदोलन हुआ बांग्लादेश में। जो मेरे पिताजी थे उनको लगा कि आप फिर आजाद होना चाहिए मुस्लिम राष्ट्र से, फिर आजादी के नारा चली जय बांग्ला, फिर लड़ाई हुआ, फिर देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया, 2 बार 3 बार सिटीजनशिप चेंज हुआ। और आज देखा जा रहा है कि वहाँ हिंदू को रहना मुश्किल हो गया। 19% हिंदू था स्वतंत्रता के बाद, अब 8% में आ गया है। फिर वहाँ से माइग्रेट करके लोग भारत में आ रहे हैं, भारत की सिटीजनशिप लेने के लिए तैयारी हो रही है। तो एक बार भारत से फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान से बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर हिंदुस्तान की नागरिक बनने की प्रयास हो रही है। और सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस जिन्होंने किया है देश के लिए, धर्म के लिए, उन्हीं के साथ इस प्रकार व्यवहार हो रहा है। बड़ी चिंता की, दुख की, लज्जा की बात है। आज थोड़ा सा सोचने के लिए लोग मजबूर रहे हैं क्यों हो रहा है हमारे साथ। हम लोग वहाँ इस प्रकार सेमिनार करते हैं, इस विषय को उठाते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं। नया पीढ़ी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, इस बात को लेकर के थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है। और बाकी दुनिया में जो परिवर्तन उसका भी थोड़ा सा वहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बंगाल का भी और वातावरण बदलेगा, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक हर स्थिति और बदलेगी। वहाँ हिंदू हमेशा डरे हुए दिखते हैं। हिंदू का वोट से जीत करके जो राज करते हैं वो हिंदू का खिलाफ ही काम करते हैं। और दुर्भाग्य से हिंदू हमेशा हिंदू विरोधी को वहाँ जिताया वोट से। उसका कारण हिंदू की बात नहीं कर सकता। इस बार दुर्गा पूजा होने वाला है, सबसे बड़ा फेस्टिवल। दुर्गा पूजा के दिन मुहर्रम हुआ, इसलिए दोपहर 4 बजे के बाद आप दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं कर सकते। उसके बाद 2 दिन विसर्जन नहीं कर सकते क्योंकि मुहर्रम है। तो जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है उसमें भी बाधा डाला जाए क्योंकि संख्यालघु का अधिकार को प्रतिष्ठित किया जा रहा है। इस प्रकार परिस्थिति हो गया है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं हिंदुओं के लिए। गांव जो है हिंदुओं का बॉर्डर में 10-10 किलोमीटर तो हिंदू शून्य हो रहा है।
लक्ष्मीकांतपुर, बंशीधरपुर, इस प्रकार नाम है, भगवान के नाम पर है, लेकिन एक हिंदू परिवार नहीं है वहाँ। सारे संख्यालघु मुसलमानों का गांव हो गया, दूर दूर तक संकट धनी नहीं होता है, महिलाओं को निकलना मुश्किल हो रहा है। इस प्रकार परिस्थिति में बंगाल गुजर रहा है। बांग्लादेश में हिंदू की जनसंख्या कम हो रही है और पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। दोनों तरफ मुसलमान यहाँ भी बढ़ रहे हैं, वहाँ भी बढ़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में 52 में जब देश स्वतंत्र हुई है तो पहला चुनाव हुआ, केवल 5 मुस्लिम एमएलए जीत के आए थे और कम्युनिस्ट लोगों का राज अंतिम बार हुआ तो 45 एमएलए थे वहाँ मुसलमानों का। पिछले बार 2011 में टीएमसी पावर में आई तो 59 एमएलए थे, अभी मोर देन 60 हो गए। तो उनकी प्रतिनिधित्व बढ़ रही है, उनकी संख्या बढ़ रही है और हम पीछे हट रहे हैं। ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं था बंगाल के हिंदू, अब लग रहा है थोड़ा सुनने के लिए तैयार हुए हैं। इसलिए राजनीतिक परिवर्तन भी हो रही है, सोच विचार में बदल हो रही है, लेख लेखन में भी परिवर्तन आ रही है। तो हम लगे हुए हैं पूरी शक्ति के साथ। आप विदेश में होते हुए भी आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। कम से कम बंगाल जगेगा तो हिंदुस्तान जल्दी जग जाएगा। राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आज एक प्रकार होगा, काल फिर बदल सकता है। चुनाव को कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हिंदू समाज संगठित नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा, सचेतन नहीं होगा तो स्थायी समाधान नहीं होगा, ना तो स्थायी परिवर्तन होगा। इसलिए बंगाल के लोग जो राष्ट्रवादी हैं मूलतः विचार से ही, लेकिन परिस्थिति के कारण कभी सेकुलर और कभी दूसरे वादी बन जाते हैं। आज उनको भी लग रहा है नहीं, हमको राष्ट्रवादी बनना है, तभी राष्ट्र की सुरक्षा होगा, क्योंकि सारा देश हमारी तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ आने की मौका मिली, 2-4 बात करने का आपको कुछ मौका मिला और सारे बड़ा परिवार को सबके सामने देखने का मौका मिला जो हमारे लिए इंतजार करते हैं। जहाँ इतना दूर आकर उनसे मिलने से लगता है कि मैं घर में ही हूँ, अपने परिवार में ही हूँ। मुझे लगता है ये सब कार्यक्रम चलता रहे, इसका परिसर बढ़ता रहे और भी लोगों को बुलाया जाए और बीच बीच में हम लोग मिले, आपस में हम एक परिवार के हैं, एक परंपरा के हैं, ये तभी महसूस होगा। और जितना मिलेंगे, जितना वातावरण बनेगा, हम समाज के रूप में, धर्म के रूप में शक्तिशाली होंगे और यहाँ रह करके आपको लगेगा कि आप हिंदुस्तान में हैं और सबसे श्रेष्ठ धर्म के अनुयायी हैं, श्रेष्ठ देश के नागरिक हैं और आपके लोग वहाँ सम्मान से रह रहे हैं। आपको भी यहाँ सम्मान बढ़ेगा, लगेगा और सम्मान आप यहाँ रह सकते हैं। हिंदुस्तान का सम्मान नहीं बढ़ेगा, हिंदुस्तानी का सम्मान नहीं बढ़ेगा। मेरा सबसे निवेदन है इस प्रकार कार्यक्रम जोरदार चले और आप भी आइए देश को देखने के लिए। देश किस तरफ जा रही है, देश आगे बढ़ रहा है और बदल रहा है। आप हिंदुस्तान में कदम रखेंगे, आपको जरूर ये महसूस होगा। इस अवसर पर इतना ही। सबको धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय। You heard from Mr. DILIP GHOSH about the challenges that Hindus are facing in various parts of West Bengal and how we are gradually, definitely are getting marginalized and driven out from their own homes. That's a very sad part. A few years ago, I read an article by a very famous Indian journalist who said that Bhutto's 1000-year war has another 950 years to go. I immediately wrote to him and I said, no, in reality, Islam has won the first 1000-year war in India because we have already created 2 countries where none existed before. It happened in 1947. The same kind of a tension is being created in India now. I use a phrase, and that's my favorite phrase, that India and Hindus have become a happy hunting ground for missionaries and Islamic people to break it apart. Rajiv Malhotra's book, Breaking India, is a revealing story. I've read that. And you know, my whole emotional attachment and aggression comes from the time when I came here in 1991, because I had to address issues relating to India, and I realized
as some of you have pointed out, that we had no coherent voice, we had no organization, we had no ability. Who was speaking on behalf of Hinduism or India? Very few. Now to continue that wonderful speech by Mr. Ghosh, I want to introduce and bring to carry that tradition Mr. Hukum Singh. Mr. Hukum Singh was an army officer who fought in Jammu and Kashmir before he joined politics. He has been 7 times MLA of Uttar Pradesh, representing Bharatiya Janata Party. And he is one of the persons responsible for BJP getting 73 seats from Uttar Pradesh. He was a BJP MP from Kairana, and you have heard about the mass exodus that happened there and how the mainstream media played that story. So I have great privilege in welcoming Mr. Hukum Singh and to carry on the conversation. After his speech is over, then we will have Dr. Prasad, and I must say here that I'm not going to introduce him to you again at that time, because his resume, apart from being an engineer and massive contribution on Hindu matters, your talks in various parts, in various universities, I will be belittling it if I were to narrate it, and I had a problem. When I decided to print his resume, my printer got out of color. So, and he wrote at the end of it that I can speak for 15 minutes, but if you want me to do more, I can do more. Mr. Prasad, I will request you not to exceed 15 minutes, but if you can summarize it in 10, that would be fantastic. Thank you. परम सम्मानित स्वामी जी, सम्मानित पश्चिमी बंगाल के सम्मानित अध्यक्ष साहब, सम्मानित बहनों, सभी सम्मानित भाइयों, मेरा यह सौभाग्य है कि आपने अवसर दिया यहाँ आने का और कुछ अपनी भावना को प्रकट कर देगा। जब मैं यहाँ आया, प्रवेश किया यहाँ पर आकर के, बहुत लिटरेरी वातावरण था, साहित्यिक ज़्यादा था, और मैं क्योंकि सामाजिक क्षेत्र से आता हूँ, राजनीति में काम किया, रिप्रेजेंटेशन भी उन लोगों का किया कि टोटल रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, जाति क्षेत्र है, बात करने की वही आदत हो गई, वही मेरा कम्युनिकेशन का माध्यम रहा। फिर घोष साहब यहाँ आए, उन्होंने कुछ वातावरण को बदला, मेरी भी हिम्मत बढ़ गई, और मैंने सोचा कि हिंदुओं के बारे में बात हो रही, अगर हिंदुओं के बारे में बात हो रही तो हिंदी में कर लिया जाए तो अच्छा है। और मेरे ख्याल में आप में से भी काफी लोग ऐसे होंगे जो हिंदी को नहीं समझ पाएंगे, घर में उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, और आशा करता हूँ जो पास पड़ोस में बैठे होंगे मेरी भाषा को समझ पाएंगे, वो करने कर देंगे उनको। इसलिए मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि बात वही होनी चाहिए जो सब तक पहुँच पाए। हिंदू एकता की बात, और हिंदू एकता की बात सामायिक है, आज के लिए जरूरी है। भारतवर्ष में रह करके और जो स्थिति हमारे चारों तरफ सीमाओं पे हो रही है, बॉर्डर्स पे हो रही है, उसको परख करके अगर सबसे बड़ा चिंता का विषय आज जो हमारा मूल देश है भारतवर्ष, आज सबसे बड़ी चिंता का विषय वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं का ये हमारा देश है, हम ही सरकार में हैं, हम ही सरकार में थे, और ईश्वर की कृपा रही सरकार में भी हम ही रहेंगे, लेकिन उस वातावरण को हम देख करके चिंता का विषय जरूर लगता है, उसको समझना चाहिए। और ऐसे विषय में फिर हिंदू एकता को कैसे मजबूत किया जाए, आपका भी सहयोग उसमें हो, क्योंकि मुझको इस बात के कहते हुए गर्व है कि हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार यहाँ आए
प्रधानमंत्री बनने से पहले तो उनको यहाँ आने नहीं दिया, वो भी बन के ही आए, लेकिन जब बनकर के आए जो स्वागत आप लोगों ने उनका किया, पूरे विश्व में उसका संदेश गया। और आगे हिंदुस्तान का हर बच्चा टीवी लगा करके अमेरिका के उस दृश्य को देख रहा था जो अमेरिका में रहने वाले भारतवासी, हमारे हिंदू भाई, हिंदी भाई किस तरह से खड़े होकर के उनको स्वागत कर रहे थे। उनकी प्रतिष्ठा को चार चांद लगे और हमारे मन में गर्व की भावना पैदा हुई कि हिंदू जहाँ भी रहेगा अपने हिंदुत्व को कायम भी रखेगा और प्रदर्शन भी उसका करके दिखा देगा। हम दुनिया से कुछ अलग हैं, हम कुछ विशेष हैं, और हमारा जब कोई आदमी आता तो हमारी आत्मीयता झलक करके सामने आती है। उसके लिए भी मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ जिन लोगों ने उस संक्षेप में, क्योंकि 2 वर्ष से सरकार बनी है, हमारे नेता स्वामी जी तो बराबर यहाँ आते भी रहते हैं, शिक्षक भी रहे यहाँ पर आकर के मित्रता का हम लोग वहाँ भी फायदा उठाते रहते हैं। लेकिन एक साधारण सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जो मैं देखता हूँ, हिंदुस्तान इतने लंबे समय तक गुलाम रहने के बाद में जो आया वही हमारा शासक बन के बैठ गया, जो आया वही हमारा शासक बन करके बैठ गया। तो मेरे जैसा आदमी सोचता आखिर है हमारी संस्कृति कितनी प्रभावशाली रही, तमाम संसार को हमने संदेश दिया, हमने ऐसे ग्रंथों की रचना की जिनका अध्ययन करने के लिए वो आज भी लालायित हैं। आखिर हमें कमी क्या थी ऐसी कि कोई आदमी ग्रीस से जाके चल रहा है, सफर कर रहा है, इतना लंबा जाके कब्जा कर लेता है। यहाँ पर भारतवर्ष में महमूद गजनी आते हैं, सोमनाथ का मंदिर ध्वस्त करते हैं, मथुरा में जाते हैं और मथुरा में जाकर के ऐसे मंदिर का जो 200 साल से इसका निर्माण चल रहा था, और एक मुस्लिम लेखक के अनुसार एक पुस्तक में लिखा हुआ है कि अगर वो मंदिर ध्वस्त ना रहा होता तो शायद विश्व की सबसे नायाब चीज नहीं होती, उसको भी जाकर के ध्वस्त कर। गौरी गाय हराते चले गए। नादिर शाह आए 1739 में दिल्ली में ठहरे मेहमान बन करके, और जब मेहमान बन करके ठहरे उन्होंने देखा यहाँ तो सब बिखरा हुआ मामला है। रात में ही उनको हुक्म दे दिया फौज को अपनी, दिल्ली में एक रात में 25,000 लोगों को मैसेकर किया, इन वन नाइट लूटा, जो भी कर सकते थे वो सब कुछ किया। लेकिन फिर भी इसके जुल्मों के बावजूद भी जब बाबर आगे हों, उनका शासन रहा हो, हिंदू आज सरवाइव कर गया। कोई ना कोई विशेष बात और है जिनके ऊपर बाकी इतने जुल्म वे भी होंगे, कोई और उसको सर्वाइव नहीं कर पाया। पूरे विश्व का इतिहास पढ़ करके देख लीजिए। ये मैं प्रणाम करता हूँ पूरे संतों को, ये प्रणाम करता हूँ ऋषियों को जिन्होंने कुछ संस्कार ऐसे दिए थे कि जुल्म सह लोगे, लेकिन एक शक्ति ईश्वर ने आपको दी है, आपको कोई बर्बाद नहीं कर पाएगा। और आज हम एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में खड़े हुए, मैं 3 मिसाल आपके सामने देता हूँ। हिंदू क्या है? 1962 में 1962 में चीन का हमला हुआ, प्रचंड हमला था, वो पूरी तैयारी के साथ उन्होंने हमला किया था। हिंदुस्तान की सेना कमजोर थी, पीछे हट रही थी, लेकिन पब्लिक पूरे भारतवर्ष का हिंदू उसकी प्रतिक्रिया दी। मैं भी छात्र था, मुजफ्फरनगर मेरा जिला है, केरल में मैं रहने वाला हूँ। मैंने देखा कि जब वहाँ के नेता लोग बाहर निकले चंदा लेने के लिए, कुछ सेना की मदद करने के लिए, महिला बड़े बड़े घरों की शॉपिंग करने गई हुई है, 10,000 का बस में पैसा है, सेना पर हमला हो रहा है, 10 के 10,000 बजाय शॉपिंग करने को उठाकर के चंदा दे दिया। अपने कानों के जेवर तो पहने हुई थी वो निकाल करके उसमें डाल दिए, गले में अगर कोई पहना हुआ था वो निकाल कर दे दिया।
और ये कहानी केवल एक शहर की नहीं है, ये कहानी हर गांव की है, ये कहानी हर प्रांत की है, और ये देख लेना ये हिंदुत्व है। ये भी मिसाल कहीं मिलेगी नहीं। हिंदू के सामने जब चुनौती आई, कभी भी चुनौती का मुकाबला जिस बहादुरी के सामने हिंदू कर पाया, शायद कोई ना कर पाए। और ये जनता की बात नहीं कह रहा हूँ, ट्रेन जा रही थी, इसमें सैनिक जा रहे थे कश्मीर की तरफ, हमारा सारा जितना भी हमारी आबादी थी उमड़ करके पड़ गई, ट्रेन को रुकाया, सैनिक बैठे हुए थे, भोजन ले लो, दूध ले लो। ये हिंदुत्व है, और यही निशानी मैं देखता हूँ, चाहे वो 1965 की बात हो। मैं खुद अपने शिक्षा पूरी करके आया, जैसे हर एक की इच्छा होती है, जुडिशियल कंपटीशन में बैठा, सेलेक्ट हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। 2 दिन के बाद मैं जाने वाला था, लेकिन रह के दिमाग में हमेशा ये आती थी कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, यहाँ पढ़ रहा हूँ। आज मैं घर के साथ जा सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों को इस समय यहाँ बैठा हुआ हूँ, कितनी कुर्बानी उन्होंने की, सारा जीवन ये जेलों में गुजार दिया, क्या फांसी पर लटके, हम लोगों ने क्या किया। और जब पंडित नेहरू को मैंने सुना रेडियो के ऊपर, टीवी तो जब थे नहीं, क्या नौजवानों की जरूरत सेना में है और आपकी नौकरी छोड़कर का है, मैं आपके सामने हकीकत कह रहा हूँ, तमाम रात मुझको नींद नहीं, मुझको क्या करना चाहिए। देश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए तो हम नहीं थे उस वक्त संसार में, लेकिन आज देश की आज़ादी को खतरा है। क्या मैं मजिस्ट्रेट बनूं, जज बनूं, या जेल छोड़ करके मैं सेना में चला जाऊं? किसी से बिना पूछे जाकर फॉर्म भर दिया, सेलेक्ट हो गया, कमीशन ऑफिसर हो गया। और ये मेरा सौभाग्य था कि जैसे 65 की हमला हमारे ऊपर हुआ है, कमीशन मिलते ही पहला पोस्टिंग पुंछ रजौरी वाले सेक्टर में हुआ, जो उस वक्त का हॉटेस्ट सेक्टर था। और आज धन्य मानता हूँ अपने आप को, कम से कम मुझको ये अवसर मिल गया था अपनी जान को जोखिम में डाल करके मैं लड़ाई के मैदान में आया। मैंने बड़े बड़े क्षण देखे, बहुत नजदीक से मैंने जीवन को देखा कि अगर 1 सेंटीमीटर भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता, शायद मैं आज बीच में ना होता। लेकिन ये हिंदुत्व की भावना मैं बता रहा हूँ आपको, और यही मुझे गर्व है हिंदू होने पर कि चुनौती आए हमने स्वीकार की, लेकिन कुछ पाबंदियां हैं। और मैं मुझे क्षमा करेंगे स्वामी जी, क्योंकि हमारे नेता हैं, मैं इनके सामने भी रखना चाहता हूँ, आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। आवश्यकता का हिंदू एकता की है, तो हमें थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। इमोशनल और सेंटिमेंटल होकर के तो कभी कभी खड़े हो सकते हैं, हमेशा इमोशनल नहीं रहेंगे। आज हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग, उसमें भी वो भाव नहीं आ पाया जो आना चाहिए था, और कहीं ना कहीं हम लोग की गलती उसमें नहीं है। उस गलती का सुधार कर रहे हैं, हमारे नेता कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और गति आने की आवश्यकता है। क्योंकि कुछ स्वार्थी लोगों ने एक अलग तबका बनाने के लिए, अपनी फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए ऐसे स्लोगन्स दे दिए ताकि वो कहीं अपने आप को हिंदू ना समझ लें, हिंदू शक्ति ना बढ़ जाए। एक शब्द निकला स्वामी दलित, कहीं है किसी शास्त्र में दलित निकला है, लिखा है कि नहीं? ये दलित शब्द निकाला गया इसलिए एक वर्ग अलग बना दो हिंदुओं का, और उनके दिमाग में जहर भर दो उस बात के लिए तुम हिंदू नहीं हो, तुम दलित हो। ये कमी है, और कहीं ना कहीं कमी हमारी भी रही है, उन लोगों की भी रही है। और आज भी जब कभी मैं अखबार में पढ़ता हूँ बात को कि फलां स्टेट में दलितों को मंदिर जाने से रोका गया, मेरा खून खोल जाता है कि जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनको शायद देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उनकी मानसिकता ठीक होनी चाहिए। अगर हमें इस प्रकार से हमारे अंदर बिखराव पैदा करके हमको कमजोर करेंगे, मैं उनको हिंदू मानता नहीं। मैं बिल्कुल हिंदू नहीं मानता। हिंदू वो होगा जो परिवार को बढ़ाएगा, हिंदू वो होगा जो हिंदू शक्ति को बढ़ाएगा। इसलिए उन नेताओं को भी मैं चेतावनी देता हूँ जिन्होंने जात के नाम पर केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, निजी स्वार्थ के लिए जिन्होंने इस दरार पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि वर्तमान बीजेपी सरकार, हमारे सम्मानित नरेंद्र मोदी जी जिस निष्ठा के साथ में लगे हुए हैं जोड़ने के लिए, ये वर्ग निश्चित रूप से जुड़ेगा और उनके सपने खंडित होंगे जो लोग उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप भी जब तक जाए इतनी दूर बैठ करके आप लोगों ने हिंदू का ध्वज मजबूत
कारण मेरे विचार में जितने अच्छे संबंध इन दो महान शक्तियों में होने चाहिए थे, शायद पूर्व में कभी रहे नहीं। और आज हमें लगता है कि संबंध जिससे अच्छे होने चाहिए थे, पहली बार अच्छे संबंध हुए और हम उन चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। जो चुनौती आज आपके सामने भी खड़ी है, इस देश के सामने भी खड़ी है और भारत के सामने भी खड़ी हुई है। चुनौती भी मामूली नहीं, क्योंकि जिस तरह जहर भरा गया लोगों पर, भरा जा रहा दिमाग में, वो अपनी इंसानियत खो देते, वो आदमी रह गए नहीं। और इंसानियत होने के बाद में एक फतवा जारी हुआ और फतवा जारी करके कहा अमेरिकन को मारना अल्लाह की शान में बहुत बड़ा पैगाम है। एम.जे. अकबर की किताब है टिंडर बॉक्स, जिसमें लिखा है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। मैं तंग रह गया, ऐसे ऐसे पत्र भी दे रहा है। हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए खासतौर से एक टारगेट है। हिंदुस्तान को अगर कब्जा लोगे तो शायद फिर मुकाबला करने वाला कोई रहेगा। और आज हमें इसी चुनौती का मुकाबला करना है। हमारे सामने प्रधानमंत्री जी के सामने चुनौती थी देश की गरीबी को दूर करना, चुनौती थी वहाँ की कृषि को बढ़ाएं, वहाँ के उद्योग को बढ़ाएं, वहाँ के नौजवानों को अवसर दें एम्प्लॉयमेंट का। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती खड़ी होगी हमारे पास में सिक्योरिटी की, सुरक्षा की। और हम मुंह तोड़ कर जवाब देना चाहते हैं। अब हम दबके जवाब देना नहीं चाहते। तो क्या वो जमाना गया, बहुत देख लिया वो। और उस जमाने में जो विचार रखे गए थे, गाने लगाते थे हिंदू भाई 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 भाई। अगर ऐसे भाई बन जाएंगे तो दुश्मन की जरूरत क्या है? मैं बराबर इस बात को कहता रहा, भाई तो कहो, लेकिन भाई जैसा व्यवहार करने के लिए तो तैयार तो करो। इस चुनौती का मुकाबला ये संतोष कम से मन में है कि ऐसा मजबूत नेतृत्व भारतवर्ष को मिल गया। आज सबकी आंखों में खड़ा है, सबकी आंखों में खड़ा है। और जिस तरह से महान शक्ति के रूप में भारतवर्ष उभर करके आ रहा है सामने, अमेरिका जैसे सच्चे लोकतांत्रिक देश का साथ हो, सहयोग हो, आपस में विश्वास हो, तो निश्चित रूप से हम शक्तियों को परास्त करने में सफल होंगे, जो हमारे पूरे विश्व के लिए खतरा बन रही है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने अवसर दिया। ज़्यादा समय में आपका लेना नहीं चाहता, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। Before I request Mr. Prasad to come, Dr. Prasad to come here, I just wanted to make one announcement that we deliberately chose to keep the speaker line short, and so that we have the opportunity to hear, listen to Dr. Swamy more and more and have a dialogue with him. To facilitate that dialogue, it is essential that we have some kind of an order, whether we like it or not. Given the Indian proclivity that if you ask for a question, you make the statement first and you forget the question. So what we are trying to do is, find a piece of paper if you don't have any. If you can do something about that, that would be nice. We have time because after Mr. Prasad, we will do, welcome and introduce Mr. Pravitra Chaudhary and Arish Saniji, the two people who have been heroic in their work to have this all going on. So what we will do is that you have 3 speakers coming in. Please write down your questions, whatever you want to ask Mr. Swamy, and we will ask this question in a random basis, not alphabetical order or any preference wise. So you ask a question. With that said, I also wanted to make a mention that Mr. Hukum Singh talked about the incessant struggle and fight. And that is truly important, that we have to recognize that, in the law of physics and engineering, you know that sometimes a little pulley pulls the thing far away and has an impact. And this is my personal experience, having been a little bit in TV journalism. I'm sick and tired, honestly speaking. I'm sick and tired of the Western media, television, talk about these 3 powerful Hindu words
which I mentioned earlier on. Guru, mantra, and pandit. They have very profound meaning in our language, in our cultural way of life. What I noticed CNN, Fox, MSNBC, everywhere, they have given a very interesting negative slant to that. The gurus of Wall Street, the pundits of political science, and the mantra of this kind. It's a very interesting negative connotation to the word. And I asked this question of one TV presenter, and I'm going to say this on Tuesday evening when I meet with some of them. He said, why don't you say apostles of Wall Street and the saints of political wisdom and the gospels of Bible? Why don't you do that instead of using the Hindu words which you do not know the meaning thereof? So, ladies and gentlemen, I want to appeal to you to begin to assert yourself and ask a question. We don't have to take down anything lying down. With these words, Mr. Prasad, please. Thank you. Dear fellow Hindus and followers of Sanatana Dharma, as we know, the word Hinduism is not really the name that is recognizing or identifying us, it is actually Sanatana Dharma. So when you see the Sanatana Dharma, the foundations of it come from the Vedas. And whenever we use the word Hindu, immediately our mind should go back to this unitary vision of Sanatana Dharma. This Sanatana Dharma talks about Urdhvamulam adashakam ashvatam prahuravyayam chandanti yasya parnani yastam veda saveda vit. This Sanatana Dharma talks about really a unity. Unity that is so important for every one of us and every human being. Because the very purpose of human life is to experience, to immerse in this unity, ekatvam. And that is what really Sanatana Dharma stands for, like an inverted tree, where all the branches, all the leaves, all the sub-branches are all coming from the same roots, and that is Brahman. The very etymological meaning of Brahman is all-inclusive. Brihat comes from the root Brihat. Why should we know all of this? Because every Hindu, we should know this. Because then with this we can fight against the divisive forces. Because the divisive forces are misunderstanding us and working against us. Hinduism itself is a total misnomer, because as we know, any other ism if you take was found at a given time by a given prophet, by a given situation. But Sanatana Dharma is not like that. The Rishis, the Rishi itself basically means Rishat Gnane, one who sees. Sees what? Sees the unity. Sees that unitary vision. Sees the same Atman going through. Seeing the same thread that is going through each and every cloth that we wear. That is unity. So today when we are celebrating this 21st World, the Hindu Unity Day, that is what we are talking about. It is that vision that we want to share to the world community. It is our duty. Like other isms have their duty, we also have our duty. And what is the duty? To really give this unitary vision in a true sense. Now what is the outcome of this vision? Ananda, Ananda, Ananda. The whole Upanishad message is nothing but to have that unitary vision, have experienced that joy, the bliss, the very purpose of our human life.
So it is really our duty in a true sense, because we are really helping the person to whom we give it. But for that, we all have to become united. Not only in spirit, but in action, in thought. Like thought, speech and action. In 3 dimensions, we have to become united. That is why our rishis kept on saying, Sankachadvam, Samvadartham, Sammo Mananti Janatam, Samaniva Akuti Hridayani. All these things are not just statements that came out of the intellectual platform, but it came from the unitary vision that the rishis had in the process of yoga. We see that, as was nicely reminded to us, the International Yoga Day, how it was brought. Because yoga, very simple, all we know that. Yoga is based on a human body, the breathing and the soul. But it came out of the Hindu origins. So we should remember that always our sages gave anything and everything from the unitary vision. That is why our rishis say, Ekattvam Anupashyata. Ekattvam Anupashyata. We know that we are all different in one way, but we are not. Why? Because when we see the universe, the multiplicity in unity, the diversity in unity, that is the way the universe is created. That is the way the universe is. Because when you take a human being, right, we all many limbs but one person. One tree, many branches. One machine, many parts. So this is the way the world is. So this unity containing all the various components, they all serve, they all understand together that it is the oneness. And whether we take the Advaita of Shankara, Vishishta-Advaita of Ramanuja, or Dvaita of Madhva, or any other mata, they all talk about that Brahma Satyam, the unitary vision. The great Ramanujacharya gives a beautiful metaphor. He says the body of Brahman, the body of Narayana, the body of this one unitary Deva is the universe itself. The universe is the body of this Supreme Being. So that is why the unitary vision is brought into all aspects. We see many forms of worship, but we worship the same Brahman, same Atman. So this unity is not just made up. It is the rishis who have recognized from their yoga sadhana, from their antar yatra, the inner journey in the self. Because as one goes in and inward, we start seeing the same unitary forces that are acting in everywhere. And that is why the Vedas again and again say, Dharmo Vishwase Jagatu Pratishtha. It is the Dharma which sustains. What is really Dharma? Dharma is that which the principles which hold and protect all of us together. When we mean all of us, the rishis meant not just all human beings, all species, all nature. That is why everything was related as part of the unity. So this unity that we are talking about at the focus of this our meeting is a very fundamental. It's so fundamental that we not only we have to recognize ourselves, and whatever we do as a Hindu, we should go with that message. We should go with that message of bringing together. Because that is where the solution for all the problems of the world today, whether it is political, or sociological, or environmental, or any other problem, we see that the solution is in this unitary vision. Ekatvam. Now, when you look at the message of the rishis again, when it comes to the sociological level, it is the Hindu sages who gave to us. Ayam nijaha paro veti gananam laguchetataha udara charitavanam tu vasudhaiva kutumbakam. This world is one family.
who gave it to us. It's our sages. Because the moment we bring that word kutumba, we bring that the mutual self-respect. So when we bring our Hindu unity message to the global level, we are actually helping everyone. Why? Because we are inducing and inducting the mutual self-respect, the mutual confidence within that there is no sinner. Everybody is born with the potential to realize their inner nature of purity. Amrutasya putraha. So this is what the message that we have. We have a very, very basic message with us. Now we have to do, now how to do it? Certainly one way is to go within ourselves to do our part. Whatever may be the nature of our part. One may be a speaker, one may be a worker, one may be whatever, it doesn't matter what it is. But the cause is more important. The cause is more important because the cause is unity. Forgetting oneself in this Brahman as the wave merges into the ocean. This whole view was nothing but the message of the Upanishad. That is why they said, Sarve bhavantu sukhinaha, Sarve santu niramayaha. They never said only Hindus be, or only the followers of Sanatana Dharma be that. They said, Sarve bhavantu sukhinaha. Everyone, without exception. So the true pluralism, the true value of human life is given by the Sanatana Dharma, the sages, the Vedas and the Upanishads and the Bhagavad Gita. As again and again Krishna says, Ekatvam. Eko Devaha Sarvabhuteshu Antaratma. So again and again we see this message of bringing the unitary vision. Now what are some of the practical things that we can do? Because as we see this Unity Day is the 21st one, certainly we have to have an action plan. So one of the ways we have to do, there are many ways to bring all the temples, to bring all the temples with the common goal of that not only worshipping, not only the ritual, but also bringing the message of Hinduism to the society outside. Now we being here in the western part of the world, in the United States, we have to come together. We have to make our effort in bringing all Hindus together. We have to participate in many, many interfaith forums, which are conducted usually by churches. It is amazing why churches have to conduct interfaith. Actually, interfaith has to be conducted by the Hindu temple, by the Hindu organization, because we are really interfaith truly. Hindus are the most tolerant, as we know. Because that is why the sages kept on saying, let everybody follow their path in their own mode of worship. That is why we have so many devatas. But all the devatas are nothing but the representation of the Brahman. So this tolerance, in terms of the achievement of the goal of the Ananda that we talked about, is really the Hindu message. So we really have to bring about, in terms of the action plan, to go to these temples and talk to them. That is one way. The another way is to participate in the interfaith forums. Many Hindus have to participate and speak on the unitary aspect of Hinduism. That's a very, very important thing, because any Hindu is as equally eligible as anybody else to represent Hinduism. Because the path of devotion, the path of knowledge, and the path of karma, some of the basics and the Bhagavad Gita, some understanding, that is enough for every Hindu to go and represent Hinduism in the interfaith forum. So that is the second forum. Then the third activity that we can do to unite all Hindus is to write articles to newspaper, letter to the editor, or something that we see that how Hinduism contributes to the world peace, how Hinduism contributes to the non-violence,
how Hinduism has contributed to the world culture. So every Hindu should write articles to the newspaper. So that is the third activity that every Hindu can do. Because it is the not responsibility of few people. Because few people can never represent the unity of Hinduism. All Hindus are equally potential and they all should represent the Hindu unity. So with that, maybe resound the message of our Rishi, Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramayaha, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhave. So this is the duty for the world. As a Hindu, we all have. Namaste. I have a small announcement to make that Honorable Dr. Swamy, Honorable Shri Singh ji and Dr. DILIP GHOSH, these three gentlemen will be there in New Jersey tomorrow at TV Asia USA Auditorium between 3 and 9 p.m. on a discussion on union of Sanskrit, Sanskriti and Sanatan Dharma. Admission is free, donations are welcome, but registration is required. So, to those of you who are very keen to go for it, please do sign up. At this point in time, I'm very excited to see and very happy to see the bunch of questions that have arrived here. So while I filter through those, I have the great pleasure of inviting Mr. Pavitra Chaudhary and Mr. Arish Sahni to follow. Because these people are the founders of this organization. These people have been working very hard for the last 21 years to make this organization being what it is. So while we are very grateful to all of you for coming here, submitting your questions, participating here, I always believe that 100 committed are more than 1,000 people just tali banane ke liye. So I want to personally thank you for being here. सुषमा जी ने मुझे कहा कि आप हिंदी में MC क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि because Srini and Bhavani, my friends, are Tamilians and they are not very facile in Hindi. But be that as it may, I studied English also in Hindi medium in the school in Bihar. तो हमने अंग्रेजी भी हिंदी माध्यम में ही सीखी है और मैं हिंदी में भी भाषण दे सकता हूँ. But this is the beauty of India, the unity of India. Kannadiga, Bengali, Dr. Swamy, a Tamilian, Hukum Singh, a UP person, Mr. Kulkarni from Pune, Maharashtra, myself, VIBHUTI from Bihar and Maharashtra as well. So, and Mr. Kotawala from Rajasthan. This is the unity of India. My fear is, my concern is, my invocation to you is that as a political entity, the politicians who are here must consider going forward, the way the efforts are being made to break India has to be fought on many levels. And one of the levels is whether we choose the EU model or the United States model. So think about it. If this United States was 50 different countries, do you think anybody would care for it? Certainly not in my opinion. So be that as it may, I am taking leave of you now for the moment, and I invite Mr. Pavitra Chaudhary, the founder of the Indo-American Political Intellectual Forum, to convey his vote of thanks and his thoughts. And he has said that he will not take more than 10 minutes. So if it is 10 minutes, please start clapping. Commitments are for ready. Now, just let me first pay tribute to Mr. Narayan Kararia, who actually mobilized the people of New York. Now, let me come straight to the points instead of going into all readings like that, because time is very short. Everybody is needed here. First of all, let us see how we can go to the path. What will be our path for forward marching? Hindus actually, as professionals, individually they are super. They are highly qualified professionals, doctors, scientists, young kids are in this PhDs, geography contest, everywhere they are shining. But collectively, Hindus are very weak force in USA that we find for the last 21 years. They are finding at all the times. They are just sitting and taken away. Now, let us see the old masters who came here. Irish Catholic people, when they came here centuries
bad. They were actually derided, they were not educated, poor, hungry. But from that position, they found out the only way to go upward is by collective effort. So they established their own schools, they established their own Catholic churches, because they were not allowed in the Protestant churches. And that way, the cooperative effort was their basis of uprising. Then they slowly built the schools with Board of Education approved syllabus. So they were giving religious teaching, plus school teaching, plus educational activity. Then they established chain of hospitals. So all connected with the mass people and all needed cooperative concerted effort. Exactly the same formula was taken by the Jewish people. They came here very poor, anti-Semitism was the rule of the day, very poor centuries back, but they exactly took the formula, established synagogues, then yeshivas, and the same board approved secondary education for the yeshivas, and then they built also chain of hospitals. Not only that doctors are working for others or their own gain, they established chain of hospitals. And Hindu population came here about 60 years back. Individually they are strong. We have now plenty of multimillionaires and billionaires. But collectively we have not been able to do anything much in the USA. We don't have a strong voice in anywhere. Anything negative, anything can be said by anyone to the Hindu community and nobody will be taking a note of it. That is the way. And just recently, 30 years back came the Bangladeshi community. Most of them are Islamic people. And look at them, they are now a very strong presence in most of the states of India, most of the states of the United States. They have got businesses, and for your information, they have at least couple of 100, 200 organizations in New York City, district-wise, profession-wise, with paid membership running to thousands, which Hindus of India don't have even one with paid membership within that kind of situation. So they are a strong force. Look at their strong force. When Imam was killed for some reason, every day 2,000, 3,000 people were going to the police precincts to protest. That pressure made the police work, and they found out as the culprit or as the suspect within 3-4 days. Hindus, when the guy was killed in New Jersey, hardly we have any people to go there, no one to go to the court, hardly 10, 15 people. That is the lack of the Hindu community, and cooperatively they have to do something. And another thing, right now a lot of Hindus have got big money. They are giving tens of billions of dollars to Harvard, Yale, Stanford, like that. That gives them a name in that department, nothing more than that. But with that kind of money, 100 million, 500 million, one can establish a big establishment with schools and research centers, temples, everything combined in one force, and also make a system so that all over USA, these temples have got only rituals without explaining to the new generation what is the use of that rituals or what are the meanings of those rituals. So these are actually throwing our generation back, and there is no effective way to combat all the negative criticism by not only American media. Our own Indian American media is actually basket for anti-Indian acts. Open up any week, any Indian American media, you will find a lot of articles against the Hindus. And actually their efforts are now just like journeyman, pedestrian effort. They are not serious newspapers even compared to the Bangladeshi papers of Tikana and others, who gives all the news, and any anti-Muslim news, anti-Islam news, or anti-Bangladesh news, they pick up from any corner of the world and present it. But Indian media in that regard is almost compares to nothing. I request you, because I find that maybe in this room or their friends, maybe millionaires or billionaires, they can easily establish an institute instead of giving 10, 20, $100 billion to some university. Because those universities like Stanford, Harvard, they have about 40, 50, 60 billions with a B in their endowment. And they have, if they need money, they can use it for any purpose. But our Hindu establishment needs a big funding and a big institution to start with in New York City. We don't have any own building of any organization. We have Bengali organization,
There are so many associations, they have all rented houses, once a year some kind of program. They have no regular program. That is actually shame on me as well as our whole community. We have to be active and do some cooperative work, whether it is hospital or yeshiva or school syllabus, so that some cooperative movement will start among the Hindus. Thank you very much. Bye. And it is less than 10 minutes before the chat. I'm 100% sure that this man, Ali Swamy, doesn't need any introduction, but I definitely want to compliment him and his family, especially Priya, who has done an outstanding work, and you have really made something impossible. There are so many questions. So we will play along. Mr. Swamy, all yours. Dear brothers and sisters, my name is Alish Kumar Sahani. Today I am standing because of the reason Mr. Kataria, Narayan Kataria, who started this Indian Day, and left on me to tell you. And I am so glad that I was able to do this thing without his presence. I know he is not present, but his spirit is around here, and that is making all of us to be here today. I am very sure he came here not because of me, not because of Hindu unity, but he came for Mr. Subramanian Swamy, if I am not wrong. Because me and Kataria used to debate all the time that we are doing the Hindu Unity Day all because of one reason, that people want to hear Dr. Swamy. So we have decided to give 1.5 hours to him after my speech, so that you can have all kind of questions and all kind of answers. So before I start, I want to thank all of you who are supporting us to make this day a success. This is our Hindu Unity Day. If you look all around, we have put a billboard, Garv Se Kaho Hum Hindu. And I think this is the message we all Hindus have to take after we leave this place. Be Hindu and say I'm a Hindu all the time. It is time to unite or we will perish in future. I'm very sure about this. What is Hindu? What is unity in nutshell? It means support each other. And this is what we have to do. How will the unity of Hindu begins? It begins very simply. If you do business with Hindu first and help Hindu in need, and when your own family is united in the time of sadness and joy, we all stand together, and that is all we need actually. I can say with conviction, all who are attending here today, you are real Hindus. Not by name, not by birth, but by your actions. Credit of this program, as I say, goes to our beloved Mr. Narayan Kataria, who is not present in body, but is present in spirit. Today we are 1 billion Hindus in this world, and they are just Hindu by namesake. Why? Because we have no nation. No identity in the world, as no nation represents Hindus at all. I want to repeat this. We 1 billion Hindus have no nation. And why we don't have no nation? This is a big question and everybody should ask himself. We have no activities to unite and protect Hinduism. Billions have died in Islamic nation formed in the last 70 years in Pakistan, Bangladesh, Kashmir, Afghanistan. How many of you heard any cry for Hindus from the World United Nations or from Hindus of the world or even from Indian government, so-called Hindu land? Leaders in India, the political, spiritual, people in social field, educators, even rich have no real Hindu identity. We are all afraid of our own identity. Most of our festivals have become fun festivals and carnivals. Our temples do not give attendees any real Hindu education. These places now display beautiful art and nice decoration to attract people for donations. A Muslim is a proud Muslim. Even 90% Muslims are converts. Look at their faces. They do not look like they are from Arab land, but look,
And also look, Christians are also proud Christian. Even 99% are converts. But looks like converts have lost DNA of love. They have no love for other religion after adopting new religion. No converts cares to want to know about his own roots even. What a shame. Converts do not want to know and find out about their forefathers, what they went through and why they got converted. Shame on us. We Hindus, we do not even tell them, remind them, and try to make them free from this bondage. We, the Hindus, should be proud as a Hindu. Why? Our parents suffered, many fought, died to remain Hindu so that we can enjoy real freedom of life and be a human being in a real sense. A human being is, what is the meaning of human being? Human being is the one who cares for all the worldly creation and to learn and teach each other how to use everything in our world and enjoy the beautiful life. Do you know any other culture or any other religion that gives so much freedom to the human being as Hindu religion does? No. Many human beings are worse than animals with human faces. No wonder intelligent and real educated Westerns and Americans now prefer Hindu culture and learning how to live like Hindus. Wish our temples had a system to convert these lovers of Hindu culture as Hindu force. Some sadhus have done a good job by giving a new face to Hindu culture. I'm not sure it's good or bad. A big question is why Hindus are not united. Our invaders were smart. Our invaders were smart to destroy us. All they had to do was to change our education system. It all due to failed education system run by our enemies. Our media is a source of knowledge and information, but it is run by our enemies. Why we are failing? We are failing as our rich, who are rich due to being a Hindu, are misguided people. They will give millions to an institution, but to put his name on one building. While you will see when a rich Arab is doing, what a rich Arab is doing, a rich Christian is doing. He is establishing education system to convert our poor and foolish souls. Big question. What I want to ask, will Hindu survive in future? Some will say yes, but he will not get respect. He has no nation to fall back, and no one will care for him. We had beautiful Varna system. Brahmin, educator, Kshatriya, warrior, Vaishya, businessman, Shudra, worker, not based on birth, but based on education and his preference. Today we are all Vaishya, busy making money. No one has real sense what he is by his nature. We had 4 stages of life plans. Now we all want to work until we drop dead just to make money. Looks like it is all due to lack of Hindu knowledge. I want to raise our hopes as someone had raised in 1947. Why Hindus do not have their own nation? 1 billion need a place of their own to maintain their heritage. Imagine if Islam takes over your nation. Why Hindus do not have their own constitution? Why Hindus have no system to bring back our lost brothers who are now Muslims, or Christian, or leftist? We need Hindu education institution to make them human beings. Why our Indian media cares less when a Hindu is killed or suffering? What we Hindus can do to stop this kind of madness? Why our Hindu institution temple should be controlled by government or one who is not following Hinduism? All this can be achieved if we get united. We are living in a great nation, USA, where people make things possible and happen. We can unite, work and make all possible. Let us unite. God bless USA and good human beings. One last message to all. गर्व से कहो हम हिंदू हैं. Now comes the easiest part of my job today, and that relates to introducing Dr. Swamy.
frankly speaking, it would be foolish on my part to try to introduce him to you. I think all of you combined know so much more about him already. His political life, his days as a student, and what he's busy doing here and in India, the enormous battles that he has taken up with virtually any number of institutions is just about amazing. So I will not take any more time. I'm very happy to tell you, all of you, that you have maintained the timing so perfect that we had intended 7 p.m. for Dr. Swamy's talk, and we are virtually there. So thank you very much again. As I'm having a mic right now, and Dr. Swamy is yet to come, I will throw the first question to him when he finishes his address to talk about it. Is that why is it that we haven't learned from our enemies? As the saying goes, you keep your friends closer and enemies closer. And I look at it this way, that every single institution building that has happened around the world has such a profound Western impact on it. Every filmmaker in the world wants to win an Oscar. Every journalist wants to win a Pulitzer Award. Every musician wants to win an Emmy Award. Olympics, FIFA, ICC, all these institutions building have happened because of the Western process, the way they did. We haven't created institutions like that, although we have all the knowledge, all the information, all the wisdom assigned in our own Sanatana Dharma principles. We just care to know. That's the question which I wanted to ask Mr. Swamy, that what is it that bedevils us from not doing it? That institution building is key to our future. And that's what I would say, that, once he finishes, we take off on that question. I'll be reading the questions at random. I kept that promise. I made that promise, and I will try to keep it. Thank you. You make the decision. Start with Bengali. तो हिंदी में शुरू करता हूँ, फिर अंग्रेजी में। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय दिलीप घोष जी, माननीय हरीश साहनी, पवित्र जी, झा जी, यहाँ उपस्थित इस समाज के, हमारे हिंदुस्तानी समाज के जाने माने व्यक्तिगण और भाई और बहनों, कटारिया जी ने जो पहली मुझे ये बात बताई कि एक हिंदू यूनिटी डे हम लोगों को मनाना चाहिए, तो शुरू में तो कई लोग संकोच करते थे आने में, लेकिन धीरे धीरे
ये व्यापक होते गई और आज भी आपने यहाँ एकत्रित हुए इस संख्या में हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बड़ी अल्पकाल में कटारिया जाने के बाद हरीश साहनी ने इस काम को संभाला। पहले भी संभालते थे परंतु कटारिया को आगे रखते थे, अब इनको आगे आना पड़ा। हिंदू एकता की आवश्यकता क्या है? किसी ने कहा कि हम 125 लाख करोड़ लोग हैं, क्या आवश्यकता है इतनी बड़ी संख्या होने के बाद? कुंभ मेला में कोई सरकार से कोई निमंत्रण नहीं आती है पब्लिक को, कोई व्यवस्था भी नहीं सरकार करती है, सिर्फ मामूली पुलिस का जो काम है वो करते हैं। लेकिन 1 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपने आप आते हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होने के बाद भी अपराध न्यूनतम होती है, ना के बराबर। तो विदेशी लोग जिन्होंने ये कुंभ मेला देखा वो मुझे पूछते हैं कि ये क्या जादू है कि सब कहते हैं हिंदू में यूनाइटेड नहीं है, विघटन है, ये है, सब अपने अपने राय रखते हैं, फिर भी ये कैसे? कोई टाइम टेबल नहीं छपा है, कोई डेट नहीं पता है किसी को, परंतु फिर भी वो ढूंढ लेते हैं, पता करके आते हैं। एक हिंदू में वो निष्ठा तो जरूर है और इस निष्ठा के कारण आज हम 80% हिंदू हैं हिंदुस्तान में। मैं क्यों कह रहा हूँ ये 80% की संख्या? क्योंकि अन्य देशों में जहां आक्रमण हुआ मुसलमान या क्रिश्चियन का, उनकी जो वहां उस समय आक्रमण होते समय जो धर्म था या उपासना पद्धति थी या मजहब था, उसको उन्होंने बहुत कम समय में मिटा दिया। जैसे ईरान ज़ोरोएस्ट्रियन की देश थी और ज़ोरोएस्ट्रियन की जो धर्म थी वो बड़ी विकसित धर्म थी। उनकी ग्रंथों से पढ़ने से पता लगता है कि कितना उनको कितनी सूझबूझ है। लेकिन मुसलमान की आक्रमण हुई, 15 साल में ईरान को 100% मुसलमान बना दी। मेसोपोटामिया, बेबीलोन जो आज मिलकर इराक है, उसको 17 साल में। इजिप्ट में फारोज थे, बड़े विकसित देश था, मुसलमानों ने आक्रमण किया और 21 साल में 100% मुसलमान। क्रिश्चियंस ने यूरोप में आक्रमण किया और उन्होंने 50 साल में यूरोप को क्रिश्चियन बना दिया। लेकिन हिंदुस्तान में 800 साल आक्रमण करते रहे मुसलमान, 200 साल क्रिश्चियंस करते रहे और फिर भी आप 80% हिंदू है। ये एक व्यक्तिगत निर्णय है जो हिंदुओं ने किया। राणा प्रताप घास की रोटी खाकर मरे, लेकिन उनको वीर, कहीं भी चले जाइए उनको वीर मानते हैं। हारे हुए व्यक्ति को वीर मानना, एक नेशनल हीरो मानना, ये दूसरे देशों में नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन वो जो वीरता थी उसकी स्मरण में लोगों ने राणा प्रताप को हीरो बनाया। जीते शिवाजी, लेकिन राणा प्रताप और शिवाजी दोनों को बराबर मानते हैं। और ये सिर्फ महाराष्ट्र राजस्थान का सवाल नहीं है। तमिलनाडु में कट्टाबोमन को फांसी दिया था अंग्रेजों ने,
उनको तमिलनाडु में वीर मानते हैं, रानी चेन्नम्मा कर्नाटक में। और इसी प्रकार से आपको पता है कि रानी झांसी की जो स्थान है, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग कोई आपको यानी विजय नहीं दिलाया, लेकिन वो जो मंशा को उन्होंने जगाया, जो चेतना को जगाया और जो वीरता दिखाई, व्यक्तिगत वीरता, उससे लोग आज ही उनको स्मरण करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत चरित्र पर्याप्त नहीं है, एक राष्ट्रीय चरित्र भी होनी चाहिए। और इसीलिए आज हम एकता की बात कर रहे हैं। और क्यों एकता? सिर्फ एक होना, क्योंकि होना एक होना अच्छा है, इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 10 साल, व्यक्तिगत चरित्र बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका राष्ट्रीय चरित्र देश को डुबा दिया, क्योंकि एक दुबला पतला विदेशी महिला के सामने झुकते रहे और इसीलिए देश में जो भ्रष्टाचार जो पनपा, उसकी राष्ट्रीय चरित्र ना होने के कारण है। जयचंद व्यक्तिगत चरित्र उनका अच्छा था और पृथ्वीराज चौहान ने जरूर उनको अपमानित किया और बदला लेने चाहते थे, परंतु हुआ क्या? उन्होंने बदला तो लिया, लेकिन मोहम्मद गौरी को मौका दिया इस देश में, कई बार हारने के बाद इस देश में इस्लाम लाने के लिए। तो व्यक्तिगत चरित्र नहीं। गोडसे का भी यही है, महात्मा गांधी को मारे और मजबूत किसको किया? जवाहरलाल नेहरू, जो आधा अंग्रेज था, जो किसी की बात नहीं सुनता था, कभी कभी एडविना माउंटबेटन की बात जरूर सुनता था और इसीलिए किसी को पूछे बिना, कैबिनेट को पूछे बिना उन्होंने कश्मीर में जाकर, कश्मीर का सवाल जाकर यूनाइटेड नेशन में सौंप दिया, और जो आज भी हमारे लिए सिद्धांत बनी है। लेकिन सरदार पटेल जो प्रधानमंत्री बन सकता था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जब राय ली गई थी महात्मा गांधी ने, तो 16 पीसीसी प्रेसिडेंट्स में 15 ने कहा कि हमें सरदार पटेल चाहिए, और महात्मा गांधी ने कहा सरदार पटेल को, तुम ही कहो मीटिंग में कि मैं नहीं बनने चाहता हूं, जवाहरलाल को बना। अब क्यों महात्मा गांधी ने किया? किसी पुस्तक में तो नहीं आया। मैंने एक बार मोरारजी देसाई को पूछा था, ये महात्मा गांधी ने गलती क्यों की? तो उन्होंने कहा कि वो ये सोचते थे कि सरदार पटेल अनुशासित व्यक्ति है, शासन है, अंग्रेजों को पहले जाना चाहिए, और यदि पहले से ये तय हो जाए कि ये बनने वाले हैं सरदार पटेल, तो पता नहीं जवाहरलाल नेहरू क्या कर देगा, और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू को बनने दो। और बाद में अंग्रेज जाने के बाद कुछ परिवर्तन आई, और वैसे गांधी ये सोच रहा था कि कांग्रेस का 2 टुकड़ा कर दे, यानी जिस दिन गांधी की हत्या हुई उस समय उनकी राय ये थी, उन्होंने सरदार पटेल को बुलाकर कहा कि तुम इस्तीफा मत दो कैबिनेट से, क्योंकि वो तंग आ गए थे जवाहरलाल नेहरू से कि मैं कांग्रेस का 2 टुकड़ा करने वाला हूँ, एक तुम्हारा अध्यक्षता में, एक जवाहरलाल की अध्यक्षता में। 90% तो सरदार पटेल के साथ जाती, 10% जवाहरलाल नेहरू के साथ रहती, बट ये उनकी प्लान थी। पता नहीं उनकी हत्या होने के कारण ये प्लान कभी ये क्रियान्वित नहीं हो सका। क्या इसके पीछे कोई कारण है? यही कोई कारण हो सकता है कि गांधी को कांग्रेस का विभाजन नहीं करने देता। मैं अभी आर्काइव में सारे कागज आ गए हैं, उसको पढ़ रहा हूँ, और मुझे लगता है 1-2 महीने के बाद
जो वास्तविकता निकले हैं, जो किसी को नहीं पता है, वो आर्काइव में मैंने ढूंढा है। कितनी गोली चली महात्मा गांधी पर, इसके बारे में कोई निश्चितता नहीं है। गोडसे कहता है कि मैंने 2 चलाई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर 3 चले, और जिन लोगों ने रिपोर्ट किया महात्मा गांधी की हत्या की, उन्होंने कहा कि 4 गोली चले। We heard 4 shots fired। ये रॉयटर्स का रिपोर्ट, अमेरिका के न्यूयॉर्क पोस्ट का रिपोर्ट और हिंदू अखबार का रिपोर्ट। और क्यों नहीं इस पर पोस्टमार्टम हुई? क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। गांधी पर गोली चली, गांधी गिरे, उनको उठाए, उस समय वो मरे नहीं थे, उनको बिरला हाउस में जाकर लेटा दिया। 32 मिनट वो जिंदा थे। एक गिलास पानी भी उन्होंने मांगी और आंखें में इतनी खून बह गए कि वो बिरला हाउस में मरे। क्यों उनको सीधा हॉस्पिटल नहीं ले गए? तो ये सारी सवाल हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इतिहास में कभी ऐसे मौके आते हैं जहाँ सही निर्णय नहीं होंगे, तो लंबे काल के लिए हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज देखिए हमारी परिस्थिति, हिंदुस्तान आजाद हो गई, स्वाधीन होने के बाद हिंदू प्रधानमंत्री बने, कई बने, लेकिन कश्मीरी पंडितों 5 लाख को हमारे देश के एक हिस्सा से भगा दिया और उसके लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। परंतु एक जगह में अखबार उछालती है तो सारा देश में किया, ओहो इंटॉलरेंस, माइनॉरिटीज इन डेंजर। यूनाइटेड स्टेट्स का कोई काउंसिल है रिलीजियस फ्रीडम का, उसका डेलीगेशन आने के लिए तैयार दिखाता है। बट 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगाया, उनकी कई महिलाओं को अपमानित किया, हमारी कई मंदिरों को तोड़ा, इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। इसी प्रकार से आप हिंदुओं के हाल देखने चाहते हो तो मल्लापुरम में जाइए, केरल में, वहां तो ऐसे आतंकित हैं हिंदू, आपको आश्चर्य होगा। अभी बीजेपी का लोगों का राष्ट्रीय परिषद मीटिंग होने वाली है कैलिकट में, तो सबको थोड़ा मौका मिलेगा। वहाँ मल्लापुरम बनी हुई है और वहाँ सिर्फ शरिया चलती है। केरल पुलिस वहाँ अंदर नहीं जा सकती। वहाँ जिस महाकवि जिसने रामायण को मलयालम में ट्रांसलेट किया, हिंदुओं ने अपनी जमीन में, निजी जमीन में उनका मूर्ति खड़ा करने चाहते थे, तो म्युनिसिपैलिटी जिस लोग मेजॉरिटी से आती है उसमें मुसलमान की मेजॉरिटी है, तो वो सारे जीत कर आए। उन्होंने कहा कि नो, आप नहीं कर सकते। मल्लापुरम में हिंदू जमीन बेचने जाता है तो हिंदू को नहीं बेच सकता, वो मुसलमान का जो खरीदने वाला है उसको म्युनिसिपैलिटी तैयार करके भेजेगा और मुसलमान को बेचना होता है। इस प्रकार की स्थिति आज की हमारी स्वाधीन देश में 70 साल के बाद दिखाई पड़ रहा है और आवाज किसी कहीं नहीं उठ रही है। और ये सिर्फ मल्लापुरम और कश्मीर का सवाल नहीं है। तमिलनाडु में मुसलमान की संख्या सिर्फ 5% है, लेकिन कई टाउन पंचायत में, नगर पंचायतों में मेजॉरिटी में, जैसे वेल्लोर के पास मेल विशालम है, वहाँ मुस्लिम 75% है, जीत गए। 40 जगह ऐसे हैं तमिलनाडु में, वहाँ चुनाव में जीते, उनकी मेजॉरिटी बनी, टाउन पंचायत उनके हाथ में आ गए और वहाँ जो 25% है उनकी हाल देखनी चाहिए। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी, सोशल सेक्युलरिज्म होने के कारण है कि हिंदू मेजॉरिटी है और ये सब चिल्ला रहे हैं इंटॉलरेंस और दुनिया भर की गाली दे रहे हैं हमें। लेकिन
जहां हिंदू मेजॉरिटी नहीं है, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, या जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन मेजॉरिटी जहां है, वहां की माइनॉरिटीज को कुछ नहीं मिलेगा। सऊदी अरेबिया में हिंदुओं की हाल देखिए, वहां इतने मेहनत करते हैं हमारे लोग, इसके कारण वहां सारे निर्माण का कार्य तो सब हिंदू ही वहां कर रहे हैं। 20 लाख हैं, किस हालत में क्या दिवाली मना सकते हैं? नहीं मना सकते। मंदिर बना सकते हैं? सवाल ही नहीं। घर के अंदर सत्यनारायण पूजा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रामचंद्र जी का फोटो पॉकेट में रख के नौकरी में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। सबके लिए सजा मिलेगी ये सब करेंगे तो जहां वो मेजॉरिटी में है, हिंदू के लिए कुछ नहीं। जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहां सलाम बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हम यूनिटी से यदि काम नहीं कर रहे हैं। और वो यूनिटी सिर्फ कुंभ मेला में कुछ इकट्ठे हो गए, वो यूनिटी नहीं। एक विराट एकता की आवश्यकता है हिंदुओं में। हिंदू कहें कि ये देश प्राचीन काल से 100% हिंदू देश था और आज भी हम 80% हैं। हम किसी को, हमारे से दूसरे धर्म के लोग या दूसरे मजहब के लोगों को हमतन करने वाले लोग नहीं है। हमने पारसी धर्म के लोग भाग के आए, उनको हमने रक्षा दी। यहूदी लोग भाग के आए और हमने उनको इतनी अच्छी देखभाल की। जब इजराइल बना, पहला प्रस्ताव इजराइल की पार्लियामेंट ने पास किया, धन्य हो भारत, दुनिया में एकमात्र देश जिसने यहूदियों के साथ शोषण नहीं किया। ये हमारी चरित्र है, हमारी इतिहास है। और आज हम सफाई देते घूम रहे हैं कि हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं है, हम कम्युनल नहीं है। मैं संस्कृत के लिए प्रचार करूंगा, कहते हैं ये कम्युनल आदमी है। नासा में संस्कृत को कंपलसरी कर दिया, क्योंकि मोस्ट कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है संस्कृत, इसलिए हो गया। तो ये हीन भावना अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में भरा था, वो हीन भावना आज भी है। मुझे लोग कहते हैं कि नहीं हम हिंदू तो हैं पर तो हम कम्युनल नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हिंदू है, कम्युनल नहीं है। मैं हिंदू के लिए बात करूंगा, मुसलमान के विरुद्ध में नहीं बात करूंगा, तब भी उन पर गुस्सा होते हैं। राम मंदिर का सवाल पर अब देखिए कितना अन्याय हुआ है। 300 साल से हिंदू लड़ते आए कि नहीं वहां राम मंदिर बनना चाहिए। वहां मस्जिद बनी मंदिर को तोड़कर। अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट में उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, कि पता करो वहां पहले मंदिर था कि नहीं। उन्होंने सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से पता किया, रिपोर्ट दिया 2006 को कि हाँ वहां एक विशाल मंदिर मस्जिद के नीचे है। अब लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में तो हम जीत गए, अपील में आए हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या बोल रही है? वो कहती है कि हम 300 साल से इस जमीन की कब्जा करके बैठे हैं, तो ये हमारा जमीन है। ये नहीं कहते कि हमारे धार्मिक स्थल मस्जिद को तोड़ दिया और इसीलिए दोबारा मस्जिद बनना चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये एडवर्स पोजेशन लॉ में आप जानते हैं, मैं आपके घर में घुस जाऊं और 12 साल रहूं और आप उस पर आपत्ति ना करें, तो कोर्ट में वो घर आपकी बन जाती है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्स पोजेशन। यानी आपका घर था तो आपको इस 12 साल में आपत्ति करना चाहिए था। वो एडवर्स पोजेशन जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना नहीं, उसको कहकर है। अब मस्जिद का असली स्थिति क्या है? एक प्रार्थना स्थल है, मजहब पढ़ने के लिए सुविधाजनक प्रार्थना स्थल है। हर मुसलमान देश में मस्जिद को तोड़ते हैं सड़क बनाने के लिए या अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए। यहां तक कि जहां
मोहम्मद ने नमाज पढ़ी, उसको भी तोड़ दिया सऊदी अरेबिया ने, क्योंकि वो कहते हैं नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है, सड़क में पढ़ सकते हैं, इस रूम में चादर बिछा के पैसे नमाज पढ़ सकते हैं, हवाई जहाज में पढ़ सकते हैं। और इसीलिए मस्जिद का कोई ऐसा स्थान नहीं है कि इसको यहाँ है तो उधर बना दो। हम कहते हैं मुसलमानों को कि सरयू नदी के उस पार बहुत जमीन खाली है, वहाँ बाबरी मस्जिद बना दो। अब क्यों इसको बाबरी नाम दिया है वो मैं इस सभ्य समाज में बताऊंगा नहीं, व्यक्तिगत पूछोगे तो बता दूंगा। बट बाबरी मस्जिद चाहिए तो बना लो, परंतु ये जमीन जो है इसमें राम मंदिर, रामलला की मंदिर क्यों बननी चाहिए? क्योंकि ये बनी थी प्राण प्रतिष्ठा पूजा से, और प्राण प्रतिष्ठा पूजा के माने कि भगवान ने उस मूर्ति में प्रवेश कर दिया है और अब से भगवान मालिक है। और सिर्फ हमारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, परंतु जब मैं लॉ मिनिस्टर था तो हाउस ऑफ लॉर्ड से मैंने एक जजमेंट निकाल के लाए थे, क्योंकि हमें एक हमारी नटराज की स्टैचू चोरी करके लेकर वहाँ नीलाम कर रहे थे, उसको वापस लाने के लिए हमने वहाँ केस डाला था। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये स्वीकार किया कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बाद बनने के बाद वहां कोई पूजा नहीं हो रही है, या टूट गई या ताला लग गई, फिर भी वो मंदिर है और वो और इसीलिए वो नटराज की स्टैचू वापस कर दी थी। अब यहाँ मंदिर था, उसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि हाँ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको स्वीकार भी किया है और किसी मुसलमान ने इसका खंडन नहीं कर सके। फिर भी वो कहते हैं नहीं, ये हमारी एडवर्स पोजीशन है और सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट में भी हारने वाले हैं और हम उसको थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। अब खेत की बात है कि बेंच बनेगी तो उसमें एक मुसलमान भी जज होना चाहिए, जैसे इलाहाबाद में थे, लेकिन ताकि कोई ये ना कहें कि सब हिंदू बैठ करके ये फैसला कर ली। हमारे लोग भी थोड़ा इसमें सेंसिटिव है, तो ठीक है, एक मुसलमान जज भी होने दीजिए, जैसे इलाहाबाद में वो भी हमारी बात ही मानेगा। लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज मुसलमान नहीं है, तो इसलिए एक नया मुसलमान को थोड़े दिन में बिहार से जज, हाईकोर्ट जज को लाकर सुप्रीम कोर्ट जज बना के बेंच बनकर दिन प्रतिदिन की सुनवाई होकर हम जीत कर फिर कोर्ट के जरिए, जैसे हमारी मैनिफेस्टो में बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहा, कोर्ट के जरिए इस मंदिर को बनाएंगे। मैं आशा करता हूँ इस साल के अंत तक ये काम शुरू हो जाएगी और अगले साल हम इस पर जीतेंगे। लेकिन कितना लड़ना पड़ता है। राम सेतु के लिए मुझे 3 साल बहस करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। क्या फैसला हुआ कि हम एक कनाल बनाएंगे, सेतु समुद्रम शिप चैनल, क्योंकि जहाज घूम के जाना होगा श्रीलंका के लिए, इसीलिए सीधा अंदर पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार से जाना होगा और वो राम सेतु तोड़ कर जाएगा। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में बहस किया कि आपको शिप चैनल चाहिए, क्यों? क्योंकि श्रीलंका से घूमकर नहीं जाना चाहते। तो फिर टूटी कॉलोनी में एक बड़ा नया नवीन पोर्ट बंदरगांव बना दीजिए और वहां से रेलवे लाइन से मद्रास होकर के कलकत्ता तक जोड़ दीजिए और सारे जहाज आकर कंटेनर को ड्रॉप करें टूटी कॉलोनी में और फिर रेलगाड़ी उसको ले जाए। वो चीपर है, फास्टर है और इसीलिए ये जो बनी है ये जानबूझकर हमारे अपमान करने के लिए बनी है, इसीलिए इसको रद्द करना चाहिए। खूब लड़ाई हुई उसमें, करुणानिधि बहुत बिगड़ गए थे उससे उस पर, और उन्होंने जब मैंने बहस में कहा कि राम सेतु को तोड़ नहीं सकते
तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर कहा कि अब कौन होता है सुब्रमण्यम स्वामी, इसको राम सेतु कहने के लिए। क्या राम ने बनाया? क्या राम इंजीनियर थे? कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको डिग्री मिली? अब इस प्रकार से राम को अपमान किया, पर राम भी छोड़ने वाले नहीं है। दूसरे दिन ये बीमार हो गए और उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और हॉस्पिटल का नाम रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल। क्या राम डॉक्टर थे? कहाँ से MBBS मिली? ये सवाल हम पूछ नहीं सकते। लेकिन ये एक जहां वहां कोई मस्जिद नहीं है राम सेतु में, ना कोई चर्च है, फिर भी हमें लड़ना पड़ा। 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया था मुगलों के राज में। हम कहते हैं उनको, मुसलमान के नेताओं को, कि 3 को छोड़ दो, बाकी 39,997 को रख लो। नहीं तैयार है उसके लिए। जब मैंने उनको कहा कि सरयू नदी को उसका बना लो, मस्जिद भी हो जाएगा, मंदिर भी हो जाएगा, अब दूर से होंगे परंतु आपको तो हो जाएगा, तब वो कहते हैं नहीं हम ये मान नहीं सकते पब्लिकली। पब्लिकली नहीं मान सकते, व्हाट डू यू मीन? सिर्फ हम मान लेंगे तो लोग कहेंगे तुमसे पैसा खा लिया हम लोगों ने और हमारी अपमान होगी, मुझे फिर कोई टेररिस्ट आकर उड़ा देंगे, जिहाद चल जाएगी हमारे ऊपर। तो ये कोर्ट से कराइए। तो हमें एक मस्जिद, एक मंदिर के लिए ऐसा लड़ना पड़ेगा। कृष्ण का मंदिर है, प्राचीन है, तोड़ा था, सबको पता है, दिखने के लिए मथुरा में जाइए आपको दिखेगा। काशी विश्वनाथ, वो तो अकबर औरंगजेब का फरमान है, तोड़ा उन्होंने, मस्जिद बनाया। तो इन तीनों को लिए जो मस्जिद है उसको दूसरी जगह बना लो, बाकी ऐसे रहने दो। ये सब का यानी विचार विमर्श होने के बाद उन्होंने मुझे बताया, विश्व परिषद ने बताया कि 3 पर जोर देना है, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ, ये इस कारण क्या है कि कश्मीरी पंडित 5 लाख अभी तक वापस नहीं जा सके। कितने साल हो गए? 17 साल हो गए, अभी तक नहीं जा सके। हमारे देश में जहाँ 125 करोड़ की जनता है, जिसमें 80% हिंदू हैं, हिंदू लोग सरकार में हैं सब जगह में, फिर भी नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्यों नहीं हम मंदिर बना सके? इसके कारण यही है कि एक विराट एकता हमारे हिंदू में पैदा नहीं है। मैं बोल सकता हूँ, हमारे यानी बीजेपी संघ के लोग बोल सकते हैं, पर तो आम जनता में वो गर्मी नहीं है। 370 धारा के बारे हम बोलते हैं, लोग हमें चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, क्यों नहीं किया अभी तक? ये तो 1 मिनट का काम है, मैं बता रहा हूँ, 370 धारा हटाने के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री बड़े सूझबूझ के व्यक्ति हैं। जब यानी फुलझड़ी जलाना है तो जला भी देते हैं, जैसे बलूचिस्तान में जलाकर पाकिस्तान ऐसा निर्मित हो गया। तो वो यदि वो 370 हटाने चाहते हैं तो 5 मिनट का काम है। क्यों? आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, क्या लिखा है उसमें कि दिस इज एक ही धारा है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें पार्लियामेंट की वोट की जरूरत नहीं है। एक ही धारा है, उसमें लिखा है टेम्पररी प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और कहा है कि ये जो 370 धारा है ये टेम्पररी मेजर है, इसको हटाने के लिए राष्ट्रपति को एक विज्ञप्ति जारी करनी है कि ये रद्द हो गया। और जारी करने के पहले जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उससे सलाह मशवरा करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। अब जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है ही नहीं,
वो बंद हो गई, डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई। क्यों? उन्होंने कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सारा कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। ये जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और 370 धारा के बारे में उसमें कोई उल्लेख ही नहीं है। जो जिस बॉडी नहीं है उसको तो पूछने का सवाल नहीं है। और वैसे भी वो जो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर बंद हुई थी, यदि वो कहकर जाते हैं कि 370 धारा को नहीं हटाना है तो फिर कुछ विवाद बनती। और उन्होंने कहा नहीं, उल्टा वो शुरुआती करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो कोई प्रेसिडेंट को और कुछ नहीं पूछना, सिर्फ कैबिनेट को रेजोल्यूशन बनाकर राष्ट्रपति को भेजना है, राष्ट्रपति उसको ऐलान कर दें तो 370 धारा गया। आपने कहा क्यों नहीं किया? हमने कहा कि हम पहले साल ही करेंगे या दूसरा साल में करेंगे। 5 साल के बाद पूछ लीजिए क्यों नहीं किया। मैं तो विश्वास करता हूँ कि 5 साल के पहले हट जाएगा। तो ऐसे जो आपके ग्रीवेंसेस हैं, परंतु ये आम में नहीं है। 370 धारा हमारे कार्यकर्ता हमसे जरूर पूछते हैं, तो जनरल पब्लिक में ये नहीं, क्योंकि हमारी जो एकता है वो एकता में वो विराटता नहीं है, और वो विराट एकता की आवश्यकता है। तो अब देखिए, हम 70-80% हिंदू हैं। शंकराचार्य कांची को झूठा मर्डर केस में जेल में बंद कर दिया। हम लोग कोर्ट में लड़े, जीत गए, वो अलग बात है, पर 3 साल लगी। शंकराचार्य को क्रिमिनल करके उसके कमंडल को हटाकर उसकी जो दंड है उसको जो जिस दंड को पकड़ के चलते हैं उसको भी उनसे छीन लिया और क्रिमिनल्स के साथ जेल में डाल दिया। डालने वाली कौन? जयललिता। अब वो है हिंदू, पूजा करती है, मंदिर जाती है, परंतु शंकराचार्य को अंदर कर दिया राजनीतिक कारणों से। उसको डराने वाले बहुत हैं। 2003 में उसने, हमारी कभी कभी इससे दोस्ती हो जाती है, फिर बाद में झगड़ा भी हो जाती है। आज झगड़ा की स्थिति में है क्योंकि मैं वो कोर्ट केस के ऊपर भ्रष्टाचार केस डाल दी। लेकिन जब हमारी दोस्ती थी, मैंने उनको कहा था कि इतना धर्म परिवर्तन की प्रयास हो रही है क्रिश्चियंस की, तो बिल लाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश में है कि पैसा देकर, लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल उसको कहते हैं, उसको एक्ट बनाई गई मध्य प्रदेश में। हमने नहीं बनाई, कांग्रेस सरकार ने बनाई थी। उड़ीसा में भी कांग्रेस सरकार ने, क्या गणतंत्र परिषद ऐसी थी, उन्होंने बनाई। हिमाचल में वीरभद्र सिंह ने बनाई है। तो ऐसे मैंने कहा तमिलनाडु भी वो करना चाहिए, तो उसने कर दिया। फिर 3 महीने के बाद यूएस कॉन्सुलेट जनरल से एक ऑफिसर, कॉन्सल जनरल नहीं, ऑफिसर आया, जयललिता से अपॉइंटमेंट लेकर मिला, कहा कि ये बहुत गलत काम क्या आपने किया। हमारा सेनेट में यूनाइटेड स्टेट्स काउंसिल फॉर रिलीजियस फ्रीडम के नोटिस में आया है और आपको नोटिस मिल सकती है। तो डर के मारे उसने उसको वापस ले लिया। तो आज इसको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई असेंबली में किसी ने उठाया? कितने हिंदुओं ने नहीं उठाया, पार्लियामेंट में भी नहीं उठा। ये 2003 की बात, 2004 की बात कर रहा हूँ। तो कितने हम आपको देंगे? अब विवाद बहुत है और आलोचना बहुत है, पर तो आसाराम बापू जो एफआईआर है उसमें कोई रेप नहीं है, लेकिन अखबारों में खूब चल गया कि रेप 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 रेप, एक लड़की को रेप कर दिया।
और अंदर हैं, 3 साल से बेल नहीं मिला। वो तहलका का एडिटर जो है, उनका क्या हुआ है? 3 महीने में बाहर आ गए। उनका तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो ग्रोसम की टीवी थी लिफ्ट के अंदर, जिसने वहां उसकी अश्लील व्यवहार वो टेप में है, फिर भी उसको बेल मिला, बट आसाम को नहीं मिला। क्यों? सोनिया गांधी चिड़ी हुई है कि उन्होंने गुजरात में एक जिला में जो सारे क्रिश्चियंस बन गए थे, उनको दोबारा इन्होंने हिंदू बना दिया। अब प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, क्योंकि उनके आश्रम में लोग उनके चेले के नाम पर जो हैं ठीक लोग नहीं हैं, परंतु फिर भी उनको क्यों जेल में रखा? और 3 साल से बेल के बिना जेल में है। जब रेप का चार्ज FIR में नहीं है, तो किस आधार पर कोई पॉक्सो एक्ट नहीं बनी है, उसमें किसी आरोप में अंदर रखा है, कोई प्रूफ नहीं है, उसका सुनवाई नहीं होती है। इसी प्रकार से हिंदू टेरर हमारे देश में, राहुल गांधी विकीलीक्स के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी में जाकर अमेरिकन के ऑफिसर को, एम्बेसडर को नहीं, ऑफिसर को कहा कि हिंदुस्तान में लश्कर-ए-तैयबा उतना खतरनाक नहीं है जितना हिंदू टेरर है। और फिर उसके बाद चिदम्बरम, उन्होंने हिंदू टेरर केस में केस बनाया, FIR किया, और एक केस चल रही थी समझौता एक्सप्रेस की, जिसमें 5 मुसलमान गिरफ्तार हुए, और उस केस 2000 से केस उसको उन्होंने, हमारी सरकार ने, ये मनमोहन सिंह सरकार ने अमेरिका को दिया। अमेरिका ने अपने CIA के रिकॉर्ड्स भी जोड़ा, और फिर जाकर यूनाइटेड नेशन ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर करना चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर भी कर दिया। और उसके बाद 2008 में चिदम्बरम कहते हैं कि नहीं, इसमें पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू टेरर के कारण हुआ। तो 4-5 हिंदुओं को पकड़ के, एक साध्वी प्रज्ञा, एक ईमानदार ऑफिसर पुरोहित, इन सबको पकड़ के अंदर कर दिया जेल में, उनको टॉर्चर किया, से बयान देने की कोशिश किया। ये सब हमारे आंखों के सामने हो रहा है। और ऐसे जटिल मामा किया कि अभी तक हम उस केस को वापस नहीं ले सके। तो यहाँ कोई उसके लिए कोई आवाज तो नहीं होती, कोई नहीं उठा रहा है। और इसीलिए क्योंकि हिंदुओं के इस दिल में हिंदू के प्रति एक भावना है, जिस कारण से हम आज भी 80% हिंदू हैं, परंतु वो पर्याप्त नहीं है। जो खतरे हमारे सामने हैं, ये खतरे के बारे में जो देखना चाहिए। हमारे इतने मंदिर सरकार के नियंत्रण में है। मैंने एक टेम्पल के चिदम्बरम नगर है तमिलनाडु में, उस वहाँ एक नटराज का मंदिर है, बहुत प्राचीन। करुणानिधि को लालच हो गई, उसकी सारा जेवर को, जो सारे ज्वेल्स और गोल्ड ऑर्नामेंट्स को चोरी करने के लिए, तो उसने उसकी सरकार टेक ओवर किया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट पे गया, उसको छुड़वाया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मंदिर सरकार लेगी अपने हाथ में, उसके वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए वो 3 साल से ज्यादा अपने हाथ में नहीं रख सकती। तो ये छूट गए। अब हमने कहा फिर सारे मंदिर, कितने मंदिर हैं? 4 लाख मंदिर सरकार के हाथ में है, विभिन्न प्रांतीय सरकारों। इनको छुड़वाने के लिए मैंने तिरुपति से शुरू किया। तिरुपति 1933 में सरकार ने डिक्लेयर किया। अब तिरुपति जैसे समृद्धशाली मंदिर है ही नहीं हमारे देश में, उसकी सारी पैसा सरकार लूट रही है, मदरसा बनाने के लिए भी दे रही है, हज पे जाने के लिए भी उस पैसा से दे रही है। आप हुंडी में पैसा डाल रहे हो अपने भक्ति के कारण, और सरकार इसे खर्च कर रही है। तो अब आप बताइए
कि जब मैंने ये देखा कि ये 1933 से है, 3 साल क्या बात है, 80 साल हो गई, 83 साल, तब किसको दें ये हम फैसला नहीं कर पाए। छुड़वाएंगे फिर कौन इसको मैनेज करेगा। उसमें 4-5 लोग आ गए कि नहीं हमारा है ये है हिंदुओं की, नहीं पहले सोचे, इसलिए मैंने सुझाया था कि एक हिंदू धर्म आचार्य सभा जो स्वामी दयानंद सरस्वती तमिलनाडु पे बना कर गए, परंतु वो अब गुजर गए, समाधि हो गई और वो ऐसे ही पड़ा है। तो कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जहाँ सारे साधु, प्रमुख साधु लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। पहला जो सम्मेलन हुआ था हिंदू धर्म आचार्य सभा, जिसमें मुझे एक दयानंद सरस्वती ने हमें वित्तीय सलाहकार के रूप में एक पोस्ट दिया, तो मैं गया कॉन्फ्रेंस में। तो कॉन्फ्रेंस आधा दिन शुरू नहीं हुआ क्योंकि बड़े बड़े साधुओं ने कहा कि जो उनका सिंहासन है वो अलग अलग साइज के हैं, इससे उनका अपमान हुआ है। तो दोबारा जाकर एक साइज की हमें सीट लानी पड़ी। ये अहंकार हमारे साधुओं में, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ क्योंकि ये सारी जो आई है वो बुराई, इसको सुधारना है और सुधार नहीं सकते हैं तभी जो हमारे पढ़े लिखे लोग में वो विराटता आएगी और हम जवाब देने की स्थिति में होनी चाहिए। अब हिंदुओं का हाल गयाना में क्या है, कजाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में जो मामूली लोग बचे हुए हैं उनकी हाल क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में यहाँ आए हुए लोग हैं, मैं जानता हूँ वहाँ कितने पुजारियों की हत्या हुई है। जिस देश को हमने पैदा किया वो हमारे पुजारियों को मार रहे हैं, माने सरकार नहीं मार रही परंतु सरकार देखते रह रही है। तो अब इसके लिए कहीं ना कहीं हमें ऐसे एक्शन लेना पड़ेगा आगे, जिससे लोगों को समझ में आए कि हिंदू को छेड़ो मत, छेड़ने के बाद हिंदू छोड़ने वाला नहीं है। ये तो आज मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले आप अपना मन बनाइए कि हम हिंदू हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर और जामनगर से डिब्रूगढ़ और कुछ नहीं। और हर चीज पर जो राजनीतिक चीजें या सामाजिक चीजें उसमें हम सिर्फ हिंदू के दृष्टिकोण से फैसला करें, जाति के आधार पर नहीं करें। तो आपके शादी विवाह में जाति होना तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वैसे भी नहीं होना चाहिए, पर तो इसके लिए हम छूट मान सकते हैं। परंतु यहाँ जहाँ राजनीतिक सवाल है, यहाँ जहाँ सामाजिक सवाल है, उसमें हिंदुओं को इतना ही करना चाहिए कि हम जो हिंदू के लिए भला करेगा उसके लिए हम साथ देंगे। इस 2014 में जो 21-22% वोट जनसंघ को मिलती थी और बाद में बीजेपी को मिलती थी, वो 31% हो गई और हमें बहुमत मिल गए। कल 40% हो जाएगी तो हमें 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। हिंदुओं को सिर्फ सारे 80% इकट्ठे होकर वोट डालने की जरूरत नहीं। दिग्विजय सिंह जैसे हिंदुओं को वोट ना दें तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हिंदू अपने को समझता है उसमें आधा 80% में 40% में वोट देने हमें किसी मुसलमान, क्रिश्चियन, विदेशी किसी की चिंता नहीं करनी होगी। इतनी सरल काम है, उसके लिए भी इतना कठिनाई है। जहाँ नहीं किया हमने, भड़काया नहीं, वहाँ देखो बिहार में क्या हुआ, आसाम में हमें वोट इसलिए मिला कि ये इन्फिल्ट्रेशन के कारण एक हिंदू साइकोलॉजी आई, उसमें हम जीते और सरकार बना ली है। तो
मैं आपको कहता हूँ कि कितना पावर है। एक सरकार तो होनी चाहिए, तब आप तभी परिवर्तन ला सकते हैं, पर वो सरकार की बहुमत कम से कम 15-20 साल और चलना चाहिए। और ये निर्णय होना चाहिए कि कितना भी गुस्सा आपको बीजेपी के साथ हो, लेकिन सरकार बनेगी हिंदुओं की, जो हिंदूवादी उनकी सरकार बनेगी। ये फैसला एक आम बननी चाहिए और उसकी प्रचार होनी चाहिए, तभी एक इतनी लंबी दृष्टिकोण होगी। और मैं कहता हूँ क्यों ये सारे घबराए हुए हैं, क्यों इतना हल्ला हो रहा है, इनटॉलरेंस, वो चीज़ ये चीज़, दलितों का भड़का रहे हैं, क्यों सब कर रहे हैं? हिंदू इकट्ठा हो जाएगा तो किसी की जरूरत नहीं है। आज तक इन्होंने हिंदुओं को विभाजन करना और अल्पमत को इकट्ठा करना, ये इनकी राजनीति थी। अब हम जब उल्टा करने लगे कि हिंदू को इकट्ठा करो और अल्पमत में विभाजन पैदा करो, किसी को शिया के नाम पर अलग कर दो, किसी को सुन्नी के नाम पर अलग कर दो, तो फिर ये यानी डर गए और दुनिया भर की प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दुनिया में भी ये हिंदू इकट्ठा होकर सरकार भारत में बनाए, ये नहीं पसंद करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज आपने हिंदू यूनिटी डे किया, ये यूनिटी सिर्फ इकट्ठे हो गए ये नहीं, इकट्ठे हो गए मंशा के साथ, और मंशा विराट मंशा नहीं है तो संख्या से कुछ नहीं होने वाला है। 1000 बकरी एक जगह में खड़ी होगी, एक शेर आएगा तो बकरी सब भागेंगे, यद्यपि संख्या उनकी 1000 है और शेर सिर्फ एक है। आप कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी हवाई जहाज हैं, टैंक्स हैं, परंतु मंशा नहीं है तो आप लड़ भी नहीं पाओगे। एक सर्कस में 5 सिंह खूब अच्छे खिला करके तगड़े सिंह बैठे होंगे, एक दुबला पतला रिंग मास्टर अंदर आएगा और उनको हुक्म देगा ऊपर चढ़ो, सब ऊपर चढ़ेंगे, मुंह खोलने के लिए कहा, सब मुंह खोलेंगे और फिर अपना गर्दन रखेगा, सब ताली बजाएंगे। यानी वो जो सिंह है उसको अपनी शक्ति नहीं जानता है, शक्ति है पर जो जानता नहीं है, और इसीलिए वो हुक्म मानना उसको सिखाया गया है। हम लोग हिंदू भी वैसे ही हैं, हम लोगों को ये सिखाया गया है, ये चलो मत, सेक्युलर बनो, सबको मानो। यानी हमारी परंपरा है कि हम सबके लिए छूट दी है, तब भी हमें सिखाते हैं। और यानी नपुंसक बनाने की एक साजिश रही है, उसमें हम अंग्रेजों ने हिस्ट्री बुक्स लिखी, इसमें दुनिया भर की झूठ। हम एक देश नहीं है, अंग्रेजों ने बना कर दिया हमें, अंग्रेजों ने उल्टा किया, उसका 2 टुकड़ा किया। आपको पता है कि अंग्रेजों ने जाते समय 600 अलग देश बना कर गए थे, सारे राजाओं को उन्होंने स्वाधीन कर दिया कि तुम अपना यू आर इंडिपेंडेंट कंट्री, तुम्हें पाकिस्तान में जुड़ना या हिंदुस्तान में जुड़ना वो तो आपकी मर्जी। हमने आपसे पावर लिया था, हमने पावर वापस दे दिया। और जो उनके हाथ में प्रत्यक्ष रूप से जो कंट्रोल थी वो सिर्फ 22% जमीन थी, उसका 2 टुकड़ा किया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। तो फिर सरदार पटेल ने बैठकर एक एक को साम दाम भेद दंड करके उनको जोड़ते 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 उन्होंने 500 को जोड़ दिया। एक 600 बाकी जो 100 थी लगभग वो पाकिस्तान गया, उसमें एक दो जबरदस्ती किया, बलूचिस्तान नहीं जाने चाहता था तो उन्होंने सेना भेज करके और उसको मारकाट करके उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। नहीं तो हमारी देश क्या होती, अंग्रेजों हमें नहीं बनाया, अंग्रेजों ने सब टुकड़ा टुकड़ा पूरा छोड़ कर गए और इसको सरदार पटेल ने बनाया। जब हम सरदार पटेल की बात करते हैं तो हम उसको चिढ़ाता है, ये तो हमारा आदमी है, तुम आप कैसे बोल सकते हो। मैंने कहा तुम्हारा आदमी है तो भारत रत्न क्यों नहीं दिया सरदार पटेल को। भारत रत्न 1991 में मेरे दस्तखत फॉर लॉ मिनिस्टर से इनिशिएट होकर उनको प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की दस्तखत के साथ 1991 में सरदार पटेल को मिला था।
और जब मैंने फाइल देखा 1954 में भारत रत्न देने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहला भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू खुद लिखता है कि आई जवाहरलाल नेहरू हियर बाय अवार्ड भारत रत्न टू जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल की नाम प्रपोज की थी अगले साल, नो, काट दिया। इंदिरा गांधी ने वो किया और उसने इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दिया। अम्बेडकर को 1990 में देश ने भारत रत्न दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया था। तो इसीलिए सरदार पटेल नहीं होते, अम्बेडकर नहीं होते, हमारे देश टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। 370 धारा के बारे शेख अब्दुल्ला ने जाकर हाथ जोड़ करके अम्बेडकर को कहा कि 370 धारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आप ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, इसको प्रस्ताव रख दीजिए। तो अम्बेडकर ने क्या किया, पेपर को फेंका, कहता मैं गद्दार नहीं हूं, इस 370 को जो पास कराएगा वो गद्दारी करेगा देश से, मैं नहीं करूंगा। तो इसीलिए फिर बाद में तो अनंत स्वामी आएगा, गोपाल स्वामी आएगा को पकड़ के उनसे प्रस्ताव पास करवाया और साहब गुस्सा में उठ गए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो सरदार पटेल को शांत करना था, क्योंकि उन्होंने नेहरू को वचन दे दिया था कि वो इंग्लैंड में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को मिलने के लिए जाना था। कौन व्यक्ति था मैं नहीं बताऊंगा, बट वो जाना था। तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं थे और सरदार पटेल को उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि तुम इसको देख लो, मेरी इज्जत चली जाएगी, यूनाइटेड नेशंस का मामला है, थोड़े दिन के लिए ये 370। तो 370 को सरदार पटेल ने कहा ये टेम्पररी है और थोड़े दिन में उसको हटाया जाएगा। अभी यूएन में कोई प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसको हटा देंगे। वो आज भी चल रही है वो प्रस्ताव, यूएन में जो प्रस्ताव हमने रखा। तो मैं आपसे कहता हूं कि ये सारे वीर लोगों को हमारे लोगों ने किसी ने आवाज उठाया नहीं उठाया। तो यही जो यूनिटी की बात कर रहे हैं, उसमें जो मूल बात है वो है कि आपकी चेतना ऐसी जगी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि निर्णय करो कि होगी तो हिंदू के आधार पर सरकार बनेगी और किसी आधार पर नहीं बनेगी। इतना भी हमारी चिड़ है कि ये नहीं किया वो नहीं किया, फिर भी हम हिंदुओं के सरकार बनाने देंगे। जो बाकी जो खिचड़ी बिचड़ी पक रही है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, जैसे आसाम के लोगों ने किया, जैसे आपने 2014 में किया, वैसे ये निर्णय पहले करिए। दूसरी है जो आपकी जो आमतौर पर मैं मांग सुन रहा हूँ, वो सारे एक को निश्चित तौर पर क्रियान्वित करेंगे। तो मैं अपने देश के लिए आज एक आशाजनक स्थिति देखता हूँ कि देश में हमारी जो नवीन शक्ति है, जो नवीन युवा है, जो युवा पीढ़ी में अब आए हैं बड़े होकर, उनमें इतनी राष्ट्रभक्त है जो पहले किसी पीढ़ी में नहीं थी। तो भविष्य उज्ज्वल, लेकिन ये जो हीन भावना है कि हम संकोचित होकर बोलते हैं, इधर उधर देख के बोलते हैं, ऐसा नहीं, एक छाती ठोक कर बोलना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हम हिंदू के लिए लड़ेंगे। हम किसी और के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, अपने हिंदू के लिए बोलेंगे, कश्मीरी पंडित के लिए बोलेंगे, जहाँ जो हिंदू दुनिया भर में उनके साथ अन्याय हो रहा उसके लिए बोलेंगे और अपनी सारी ताकत लगा करके करेंगे। ये कहकर आप जो सवाल पूछना है झा साहब आप
we request your continued silence. Alish has requested, and I wanted to say that much time ago, is that please switch off your phones if you haven't done it as yet. Now, it is truly an honor to be here, to be having a discussion with Dr. Swamy. I had the opportunity when Dr. Swamy was speaking to look up all the about 47 question sheets that you sent here. And what I did was I quickly went through that and put it down into about 14 categories. Those questions fall into that. So I will address those questions and one statement, and that is, which is table number 1. Purnima and Andrita Kapoor. Are you here? Yes. Oh, there you are. Okay. Message from them. No questions from Mr. Swamy, but missing the presence of Ms. Narayan Kataria ji. Compliments and congratulations. Cool Sabha on 21st Hindu Unity Day. Very proud of Swami Subramanian ji, organizers, Bhavitri ji, Arish ji, and Shushma ji. It's about my name. I didn't know your name, so sorry. But I'm just kidding. I pulled your leg and you the space was very small. I needed a big one. Okay. The questions I will go by as they came about. One of the questions is about the future of India. So Dr. Swamy, how do you visualize what India would look like in the 10 years and beyond as things are today? See, as far as India is concerned, it is a land of great potential. Give you an example. World over, the households save very little in each country. But in India, of the total investment in our country, 85% comes from savings of households. And the credit goes to the women of India. And they are the ones who save. The men go on spending, but the women, keep on putting little here and there, and then they put deposit in the bank. So our savings rate today has reached. It was at one stage 38%, but now in the last 3-4 years, it has come down to 32%. It can go back to 38%. If it is 38%, and we use our capital or our investment without wastage, without corruption, then this rate of savings will give you easily 10 to 12% of growth rate in the GDP. And if you have a growth rate of 10 to 12% for 10 years continuously, you will be ahead of China, and you will be just next to the United States of America. Second factor, we have so many resources which we don't use. For example, solar energy. We have got so much sunshine, but we don't use it. Go and see so many countries like Israel and others, what they do with their solar energy. And that's a very efficient. So we should work in that direction. The sands of Tamil Nadu and Kerala have 60% of the world's thorium. And thorium can be converted to uranium and be used in a reactor. It will be a clean reactor, unlike a direct uranium utilization in a reactor. The direct availability of uranium will exhaust by 2050. And already the Americans have started planning for it. And they have started research on thorium. We have already done, thanks to the Homi Baba, complete research on the thorium. If we do thorium, use thorium, create thorium reactors, you can give power supply to every household practically free. That will be the capacity. So we have to work on that.
Third thing is that our agricultural products are, by comparison with international prices, the cheapest in the world. Milk is only 1/8 the price in Europe. Rice is 1/4 the price in Japan and South Africa. Wheat is 1/2 the price in the United States. So, why didn't we export these things? And nobody thought that agriculture can be an exporting sector. Moreover, 12 months of the year you get sunshine and you can do agriculture. America, 5 months you got snowfall, no agriculture. Europe, same thing. 4 months of the year, snowfall, no agriculture. Even China, and 2/3 of China, you can't do agriculture for 2 to 3 months. But our country will do 12 months, which means you can grow 3 crops. But we only grow today, in 25% of the land, we grow more than 1 crop. So, if we can help the farmer, give him the necessary water, electricity, fertilizer, he will grow 3 times the crop in the same land. Moreover, the yield per acre of the Indian farmer today, because of lack of amenities, is 1/6 the level achieved by the Indian Council of Agricultural Research on the same Indian land by using fertilizer, water, electricity, etc. So our production can also go up. India should become a agricultural products exporting economy. You will, no time at all, you will be able to overtake the world. In fact, if we have what, 150 million cows, and each cow on the average gives you only 200 liters, whereas the Israeli cow gives you 11,000 liters because of its proper nutrition. Our cows, if they are given proper nutrition, they will give you much more than 200, they will give you 2,000 average. And that itself means so much milk that we can wipe out the European, whose milk production is expensive by 7 times. So, wherever you go, there is potential. Look at our young population. This is the population that will be doing the innovation, will be doing the scientific research, will be thinking of new ways of doing it. 70% of our population is below the age of 35. 50% is under 20. Europe is getting old because their younger generation is, they are only producing 1 child per family, so the younger generation is hardly, it's what is called as an aging population. Japan is aging much faster. Average age of an Indian is 26. Average age of a Chinese is 35 because they did this 1 child per family forcibly. Similarly, America is 37. Europe is 46. Japan is 50 years average age. We have a young population. Population is a liability if you don't train them, if you don't educate them. So going for a massive education program, for which it's not difficult at all, and equip our people to be able to stand on their own feet and become exporters, become farmers, etc. So if you are talking about India's potential, it is unlimited. What we need is now focus. I'm telling you some of the things that our Prime Minister has done, not getting any publicity. If you go and see in the way this Make in India is getting translated in different areas, you will understand. You will see it after some time. But his focus is very clear. But unfortunately, we are not able to back him fully in the sense of the entire system is so thoroughly corroded in 67 years of Congress rule that to make that deliver goods will take a little time. So there is never be, don't be, pessimistic about our future.
We've got tremendous possibilities. India will be, it was once upon a time the most developed country in the world up till the year 1300, and I will predict you by 2050, India will once again become the most developed country of the world. And I would like to take this opportunity just to share an actual experience that I had. Yeah. And since the Sansad are here, thought to you, all of you here, is that in 2007, I had the privilege of doing a keynote address at the Human Resource Planning Society of the United States, their convention in Florida. And the theme there was that how would India sustain 8 or 9% of growth rate that we were notching up at that time, given the less shortage of skilled people. So the question was, how do you define opportunity in India? And I said to them at that time that in 2007, there were a total number of aircrafts that were serving the flying needs of Americans, but approximately 6,500 plus. India, 1.2 billion people, there were about 350 aircrafts. So if we just began to connect various cities where it takes 39 hours to travel, I used to do the Janta Express travel from Bombay to Bhagalpur in 42 hours. You can travel now in 2 hours. So if India just connected the flight systems around the country, just imagine for a moment the airport, the rail, shops, how many more businesses will be created. And the same analogy I use for hospitality industry, for domestic tourism in India, our heritages. To connect those heritages, if we created the hotels, we had in India between 1 star to 5 star, 1 lakh rooms. At that time, Vegas alone had 1 lakh rooms. So think about the opportunity that India has. Look at the number of foreigners coming to our hospitals. Yes, yes. We are cheapest medical tourism. The medical tourism is now growing. So build hospitals. Correct. In large numbers. Thank you. The next question is, there were several questions about India's dreaded caste system. And many people have asked that question, why can't we abolish it? Why can't we have an economically driven reservation policy? And how did Hindus allow, I mentioned that, how did Hindus allow to be branded with various caste structures? What can we do about it? First, please understand, we have two concepts, and the British and the Portuguese collapsed it into one, and they called it caste. One is called Varna, and the other is called Jati. Jati is based on bloodlines, but Varna is not based on bloodlines. Varna is a division of labor. Brahmin is not a person who was born a Brahmin. Brahmin is a person who takes to what is called as education and gives up all the luxuries of life. That was the original concept, but he will be the highest socially. So Vishwamitra was a Maharishi, but he was born in a Kshatriya family. Same thing with Vedavyasa, who wrote the Mahabharata. He was born of a fisherwoman, but he became a Maharishi. Kalidasa was cutting wood in the forest, became a Maharishi and a Mahakavi. Valmiki was a Dalit, and he became a Maharishi, wrote the Ramayana. On the other hand, Ravan was a Brahmin. How many people know that? He was a Brahmin and he was born not in Lanka, he was born in near Delhi in a place in Noida called Bisra. You can even today go there. There's a big board put by the villagers very proudly. Ravan was born here. He went to Mansarovar and Lord Shiva gave him a boon. With that he went and conquered Lanka and became the king there. But he committed a crime and so he was punished by a Kshatriya, Lord Rama. Brahmins don't say, oh, this Kshatriya has killed one of our Brahmins.
There's no such consciousness. So Varna is a fluid concept in the sense that there is no such thing as a Brahmin or a scheduled caste or anything permanent. Scheduled caste was a very small thing, but during the Buddhist period and the Islamic period, the numbers became large. But if the DNA test is done, we are all of the same DNA. Whether you are a scheduled caste or a Brahmin or a Muslim or a Hindu or a Christian or a Hindu, all our DNA is the same. And that means we are one people. So that, now as far as Jati is concerned, it is certainly because of the marriage concept. You can't marry your sister, you can't marry your brother, you can't marry the foreign types of cousins. For that they drew up the bloodlines. And that is got nothing to do with your social status. This British and the Portuguese made it into a big concept, and on that basis they did the recruitment, they created a chart regiment and all that. So, can the caste go? Yes, it can go, it will go. If you say that only a professor can be a Brahmin, and if he is an executive in the Bata Shoe company, he can't be a Brahmin even if he is born in a Brahmin house. This whole concept will go in no time. All you have agreed to intervarna marriages. You think that there is no difference between a Kshatriya marrying a Vaishya or a Shudra marrying a Brahmin. That kind of thing goes in your mind. You will see that they become fine, everybody becomes equal. Ambedkar was educated by a Brahmin teacher. His name was not Ambedkar. His Brahmin teacher's name was Ambedkar. And his Brahmin teacher said, you are a very bright boy, but there will be a lot of prejudice against you. So change your name from Mahar to Ambedkar. And then he got a scholarship to Columbia, and there he got a PhD in economics. And then he went to London and got a law degree and came and wrote the Indian Constitution. And he was never respected by the political opponents of Ambedkar. They used to call him Bhimrao. Jawaharlal Nehru went to Cambridge and failed the exam there. And they gave him a gentleman pass degree. And there we people called him Pandit Jawaharlal Nehru. A man who could pass an exam is Pandit. A man who came back with a PhD is Bhimrao. That prejudice is the cause. And that has to be overcome, that we are same people, we have the same ability, there is no difference between one Varna and another Varna. That is how it will go slowly. It will go, but go slowly. Right. Thank you, sir. Related to the thought that you mentioned earlier on during your talk, that from Kanyakumari to Kashmir and to Jamnagar to Dibrugarh, Hindus have to unite. What would you tell us today that must happen there for that to happen? If you ask me one thing you must do as living in the United States, see that your children are persuaded to learn Sanskrit. Don't do anything else. Sanskrit will do that. I don't want you to go out of your way to do anything. That process of learning Sanskrit and becoming proficient in Sanskrit will itself induce in your system the necessary outlook to become a Virati. Having studied Sanskrit in my high school days, I know how beautiful it is, because even every sound is defined there. It's lovely about that. Coming back to the question about Kerala, a state which is very beautiful. I was in Kerala 2 years ago with my wife, a sudden trip, and going around to Kanyakumari and other places, I asked the driver, how come you always have a communist government and why there is no BJP here? He looked at me a little scared, thinking that I could be a Muslim because of my fear. When I told him my name is VIBHUTI, I saw his fear. Then he started talking. He says the Christians and Muslims will never let any Hindu candidate win. Never. And to that end,
we see now that it's very bizarre. I read in Kerala, so many Hindus have been killed. You gave the example of Malappuram. Yeah. I have been to Calicut, and I know Kerala has such a prominence of Hindus are, even though majority, they are kind of scared. What can we do? What can BJP, what the country can do about it? Hindus can. Well, at the moment, BJP is posing such a threat that the communists are targeting our particularly the RSS people, killing them. And there is no follow-up action. The same thing happened in Tamil Nadu also for some time, but now it's stopped. And there the Muslim fanatics did it. I think, you see, that old idea that the Muslims and the Christians will not allow, that is now going, because this time the BJP didn't win only one seat, but it got a large amount of votes, which had never been there before. The Congress, in fact, is angry with us because we got so much votes, their votes went down and they were defeated by the communists. I think this is a temporary phenomenon. I mean, we have heard this before. When I remember when I was in first joined Johnson, people, we used to lose every election. And people said, you never make a chance because, people don't like your thing, Hindus will never be right, they will be always cast away. Today, the new avatar of Johnson is now in power. So, the time is in our favor. But yes, you are right that these our workers are being killed. Very sad. In 10 minutes or 15 minutes, we will end up the Q&A session here because dinner will be served, and I suppose you must be all hungry. But if I were you, I would still like to engage more. Yes, You're okay with that? Please continue. You're not. What is central government? Central government is BJP now. What is BJP can do to prevent that atrocities of LDF government in Kerala? If there is any action from the central government to stop this kind of atrocities? Well, we are reading in Calicut, one of the things we discuss is this. But if you ask me what can be done or what will be done, I don't know which you want to know. What we can do is dismiss the government and have president's rule and fix them in no time. I did it once when Chandrasekhar was Prime Minister. I did it in Tamil Nadu. These LTT people are killing all our people. And I went and sat there after getting the sanction from the cabinet and dismissed the government. And after that, LTT never could show its face in the open. So to jail in the Janta period, that we even forgot to fill the case diary. And the court throughout the and the whole climate change. See, people say, oh, they've got nothing, they've just been talking rubbish. So we don't want to miss out. I don't think you have to worry. There's no escape. And it's only a question of time. Thank you, sir. The next question is a serious one again. It is about China and China-Pakistan economic corridor. Pakistan has ceded that territory. They are investing big time. How does it impact India, given the fact that India has made its own move towards Balochistan and Iraq? Well, see, dealing with China, you have to make one decision. And that is, of course, you should never be like Jawaharlal Nehru living in the air. You have to have your ground preparation. And there are many places where China is very vulnerable. Take for instance Malacca Strait. The Andaman Nicobar Island, the lowest point is now called the Indira Point. It has been called something else before, but now it's called Indira Point. And from Indira Point to Indonesia, which is Sumatra, is only 90 kilometers. 90% of Chinese foreign trade passes through this narrow.
If we have an alliance with Indonesia and say we will police this Malacca Strait, Chinese will be in deep trouble. Right? And they don't have that kind of navy to defend it. So that kind of capacity we have to develop, number one. Two, the Chinese cannot repeat 1962 because 1962 was a really emotional failure of Jawaharlal. He just collapsed. They have such a long supply line. The whole of Tibet is hostile to the Chinese. So, if you go and bomb the supply line of the Chinese, they won't be able to pursue the war in that place. So, China's last hope is to tribute trouble through Pakistan. Now, we have to tell the Chinese, don't do it. But then they will say, don't help Japan. Japan and China are deadly against themselves. And we have taken a stand which is very favorable to Japan. So they said, why did you enter into this dispute with us? So it's an intricate thing. But China is not very happy with Pakistan because I've known them well. I've dealt with the Chinese when I was Minister of Commerce and all that. And they tell me very clearly that we know that Pakistan is training terrorists to come into Xinjiang, their province. So somewhere I think we have to make a decision that Chinese relations, good relations with China is more important than our relations with any other country. And therefore we don't get into jagras which the Chinese have having, say, with Vietnam or with Japan. Then China can be managed. Without China, Pakistan is zero. It can be any time broken into 4 pieces. I'm not going to ask any follow-up question for understanding purposes, because Pakistan is a country, we granted them most favored nation treatment many years ago, and they are making it as an issue on Kashmir and negotiating, they haven't given us. I do know that Indian traders and businessmen perhaps will lose a bit more if India were to withdraw that. But I'm personally a believer in the concept that I think we can withstand that loss. So why don't we revoke that MFN and bring Pakistan a proactive action that like Mr. Modi did with Balochistan? We haven't done any action so far. Yeah. They're only scared Just by saying. No, the thing is that why don't we, you see, at this stage, we were in the it's not my view, because my view is a hardline view, but I can give a sympathetic interpretation of the government stand. They wanted to experiment whether it's possible to have, by peaceful methods, deal with Pakistan. At some stage, the Prime Minister will take a call that this is not happening, he is just taking advantage of it. In that time, these are the options that we consider. Final question. Dinner is getting ready. This is the final question. No Q&A in America can be complete without a reference to Trump and Hillary. No question will be, no Q&A can be complete in America without a reference to Hillary and Trump. Who do you think will be beneficial for India and why? You people live in America. I have lived in America for many, many years before I went back. I know as much about Americans as you do. Let me say that the Americans are the most unemotional people I have ever met. Everything is cost-benefit analysis. Even if they want to keep a marriage or entertain divorce, it's all cost-benefit analysis is done. Whether being married is good or getting divorced is more profitable. So they are very practical people. And therefore, it doesn't matter who
is going to be the president, as far as India is concerned. Because the American president is always faced with options, which the think tanks give them, and they have to choose one of them. That's a limited option. They don't have, they give speeches and all that. However, since we are all Indians here, I don't want to interfere in their internal affairs, but in my opinion, Hillary is emotionally more committed to Pakistan and China than she is. This is a question which often comes about on television debates. And one of the things is most of the Indians end up being more Democratic supporters than Republican supporters. And I always wondered why. And it is a really perplexing thing, because deep down most Indians are conservatives. So the support to the Democratic Party is only based on the ideal of democratic socialism that existed in India. And that's what I told people, that Bernie Sanders is bringing Congress Party back here. So this is a country which taught us there is no free lunch. So how can there be a free medical insurance, and how can there be a free education? Be aware when somebody offers you something free, because somebody got to pay for it. Either you or I or the Now, I'm so delighted and so honored to have had this Q&A. Mr. Jha, yes, what about West Bengal? Something 2 years back, it was a favorable condition for BJP. What was happened? The radical change, I don't know. DILIP already said. I need to know from him. What about Me, I have to listen to his opinion. He is the president of the party there. What you say, it is like Kerala or something else. No, Kerala, because the president was not here, so I will speak to him. Once the president is here, he must talk. You already said, but what is the central leadership? He will know, because he is the one who brings the central leadership. Okay, last question comes from Sushmaji. 1 minute, please. And please be seated where you are. It's a very important announcement coming right after this. Sushmaji. How soon BJP will be able to solve the problem of Kashmir with Pakistan? There is no question of solving the problem of Pakistan with Kashmir. Problem of Kashmir with Pakistan. Because Pakistan never will be reasonable. We'll have to do something with Pakistan, not do anything about. Our problem is, first of all, let me tell you, all these troubles that you are seeing is limited to 15% of the population. Large sections of Kashmir, which is Jammu, Ladakh, there is no unrest, everything is going on normally. In the valley, it is the militants who are financed by Pakistan, and the fact that over so many years of Congress rule or NC rule, they have, the police is demoralized, the Jammu Kashmir police can't do anything. And if you bring police from outside, like we have brought CRP and they don't know the local conditions, so they take extraordinary retaliatory action and so on. But these children who are being killed are given narcotics by the militants and then sent up to throw stones and in the process suffer injuries. So there is no way you can reason with them, because their financiers have said very clearly, now you take this to a finality so that somehow we can go back to the UN. We have to, the hard options are, somewhere the government of India will have to take a call whether this coalition is worth continuing. In my opinion, it's not worth continuing, but I am not the one who is to make the decision. The decision makers in the party should decide whether this should continue. My solution is, you have president's rule, you are directly ruling, and thereafter the whole state should be brought under the Armed Forces Special Powers Act.
And all this you start doing after making a contingency plan for liberating Azad, the so-called Azad Kashmir. That is the way to proceed about it. And you will get an opportunity, and you should. I'm sure you will get an opportunity because the China and Pakistanis are being pushed by the militants to go to war with India. So I'm sure that one of these days we are going to have a formal war with Pakistan like we had 4 times. Thank you, Dr. Swamy. It was really